Hello. Hello. Yes, sir. No. सुप्रभात सभी साथियों को। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम लोग विधिवत रूप से कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। All friends are kindly requested to take their seats. I would like to request Ms. Neera ji, please call people so that we can initiate the program on minute for minute. A very happy morning to all. It's a pleasure to have this meeting on learning, sharing event on localizing SDGs, placing community at the center of WASH program. It's my honor to invite Akila Shivaji, Executive Director of CFAR, who has been working extensively with the community for decades. We welcome you, ma'am. We also have Juhi Jain from CFAR to the dais. And we have Sami Ranjan Das from CFAR, and we have pleasure of inviting. And we know HANSA India has been working very diligently on WASH issues for many years from now. And we have our conveners both at international and national levels, and we have pleasure in inviting Mr. P.C. Mishra ji on to the dais. We have our Dr. Sitaram ji, who has been working in Karnataka and nationally and internationally. We have pleasure of calling pleasure. Of course, we have our Vijay Shankar sir, our national convener, who has been untiringly working for us, and we have immense pleasure in inviting sir. We also have our state representatives, Dr. Mayur Joshi from Gujarat. Sir, we welcome you on to the dais. And we have Dr. Mazhar Rashid from UP, who has extensively done work using technology. We welcome you, sir. And we have Mr. Sanjeev from Jharkhand. Sir, can you please come on to the dais? It is a privilege to invite Ashisha from transgender representative. Can you please do that? And we have Smarted PWD person. Thank you, sir. And we also have Sadashiva Panda from Telangana. Yes. Pandaji from Odisha. Pandaji from Odisha is asked to be with us, please. Yeah, just we are coming here to दीप प्रज्वलन के लिए हम लोग आ रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि आप लोग अपने सीट पर खड़े हो जाएं प्लीज। और मैडम से आग्रह है कि आप इस आप प्लीज अखिला जी अल्फाबेटिकली ये with a big clap that this is पर अरेंज कर किने कहि कि नहीं हेलो समी all ladies first yes
श्रीनिवास मेरा नाम लिख प्लीज श्रीनिवास प्लीज का Yes, he has pleasure in inviting. please come. You are the backbone of this workshop. Yeah. Dr. Sitaram. Yeah, please. Mr. Sir. स्वागत के लिए स्वागत तो ठीक है चल we are all in a group. Yes. Ma'am. मोबाइल में इतना भेजते हैं आप It's a pleasure to start the program. Now I invite Mr. Uday Shankar Ji, our national coordinator for FANSA, to start the program. Please come back. थैंक यू सो मच मीरा जी, आपने इतने सुंदर इंग्लिश में बात की शुरुआत की है। हमारे दोनों ग्रुप हिंदी और इंग्लिश दोनों से ताल्लुकात रखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी समझते हैं, हिंदी भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी CFR टीम के साथी हैं और जो फैंसा टीम के साथी हैं कि दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखा जाए ताकि हम लोग लाभान्वित हो सके। जिनका जो स्ट्रेंथ है उसी में वो बात करें, हम लोग दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इन हिंदी। तो सर्वप्रथम मैं जगन्नाथपुरी के इस पावन धरा को नमन करता हूं और सौभाग्यशाली हम अपने सभी साथियों को भी समझता हूं, अपने आप को भी समझता हूं। इस पावन भूमि पर जहां की देवताओं ने आकर अपना निवास स्थान बनाया, वहां पर आज हमें ये वर्कशॉप करने का एक सौभाग्य मिला है। इसके लिए हम सीफार टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को ये जो अवसर दिया। तो इसको हम जितना हो सकेगा इसको लर्निंग को हम सीखेंगे, समझेंगे, आत्मसात करने का प्रयास करेंगे और अपने व्यवहार से रिफ्लेक्ट करते हुए जो आपका एक पैगाम है कि वल्नरेबल सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन वहां तक पहुंचना, उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे। इस बात की हम फैंसा टीम की तरफ से एक आश्वासन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से आश्वासन है। स्वागत के क्रम में सर्वप्रथम मैं अखिला मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दोनों टीम के तरफ से, फैंसा के तरफ से, सीफार के तरफ से कि मैडम मैं केवल इतना ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितना एक्टिव आप हैं ये हमारे युवाओं में भी एक्टिवनेस आ जाए कि हम सभी युवा देश के अलग अलग कोने में जाके हर गली में, हर शहर में, हर राज्य में हम एक अखिला मैम पैदा करें ताकि हम ये जो वाटर सैनिटेशन हाइजीन का जो एक पैगाम है वो जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक गली से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी तक पहुंचे। तो अखिला मैडम का सर्वप्रथम हम इसमें स्वागत करते हैं। स्वागत के कड़ी में आज जो ही मैम से मिलना हुआ, लेकिन आई सैल्यूट है कि उन्होंने कितना मतलब मेल पर लगे रहे, कितने बार बैनर चेंज हुआ, कितने बार हमारे ये प्रोग्राम का शेड्यूल चेंज हुआ, एजेंडा चेंज हुआ, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे रात को 1 बजे तक वो फोन पर लगी रही, करती रही। स्वागत के कड़ी में जो ही मैम आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथी जो भुवनेश्वर उड़ीसा चैप्टर के हेड हैं उड़ीसा से, हम उनका समीर रंजन दास जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है।
हेड तो हमारे दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हमारे हेड हो और आपने यहाँ पर हमें बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। रवि किरण जी का स्वागत है, डेनियल विनोद जी का स्वागत है गीता साहू जी का, और श्रुति हेमानी जी जयपुर से हैं लेकिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि मैम आप हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। मनु खडोलिया जी का विशेष रूप से स्वागत है कि ये साइन लैंग्वेज के तौर पर जो हमें बताने जा रहे हैं, क्योंकि इंक्लूसिव का क्या एक अप्रोच हो सकता है उसका एक जीता जाता उदाहरण है, और उन्होंने हमें एक मौका दिया है कि जो व्यक्ति जिनको सुनने में तकलीफ है वो भी व्यक्ति इस चीजों को समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं मनु जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत जी हैं यहाँ पर, कितना हंसमुख चेहरा, कितने अच्छे से उन्होंने बात किया, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत जी का स्वागत है यहाँ पर। स्वागत है आशीषा जी का कि मैम बहुत सारे हम लोग समझ नहीं पाते हैं और आप कितना हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, इसके लिए इस क्रम में आपकी बहुत बहुत हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारे इस कड़ी में जो डॉक्टर सीताराम जी जो कि एक अहम कड़ी है, सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल, जो कि मोर देन 50 कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, और वहां पर हमारे साउथ एशिया से रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सीताराम जी हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सीताराम जी का बहुत बहुत स्वागत। महाभारत के युद्ध में एक भीष्म पितामह हुए और एक हमारे फ्रेंसा में भीष्म पितामह कहे जाते हैं, फिर पीसी मिश्रा साहब। पीसी मिश्रा साहब का बहुत बहुत स्वागत। रसोगुल्ला से मीठा बात करते हैं, और जब वो कड़ाई करना होता है तो एक टीचर की तरह डंडे लेकर हम लोगों को काम करवाते हैं। मिश्रा सर सैल्यूट यू, बहुत बहुत आपका स्वागत। डॉक्टर मजहर रशीदी जी इज आवर को-कन्वीनर, डॉक्टर मयूर जोशी जी इज आवर को-कन्वीनर, बोथ ऑफ यू आर आवर बैकबोन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कड़ी में। हमारे आंध्र प्रदेश अभी सबसे जो वाइब्रेंट चैप्टर है यदि मैं कहूं तो वो हमारा आंध्र प्रदेश है, जिसमें कि श्रीनिवास चेकुड़ी जी और मीरा जी बहुत बढ़कर भागीदारी ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी हमारे झारखंड से हैं, जो कि झारखंड आदिवासी बेल्ट है और वहां पर काम करना इतना आसान नहीं, वहां पर वो काम करते हैं। संदीप जी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव झारखंड, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सदा शिवाजी जो आज बैटल लेकर तेलंगाना का आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पांड्या जी हमारे सभी में सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब स्वागत की कड़ी में दो नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा जो हमारे इस प्रोग्राम का पूरा संयोजन करते हैं। ही इज मुरली रामा सेठी जी और स्नेह लता जी इज रीजनल कोऑर्डिनेटर। उन दोनों को हम लोग यहाँ पर उनकी कमी फील कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ हम लोग जरूर जुड़ेंगे। अब इसमें मैं स्वागत की बात नहीं करते हुए कुछ अपने विषय वस्तु पर यदि मैं बात करूं तो केवल इतना कहना चाहते हैं कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। ये बहुत व्यापक है, इसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, इसका डायमेंशन बहुत डाइवर्स है। समझना है कि हम इसको आत्मसात कितना कर रहे हैं। इसके लिए सीफा जो कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें 2 दिन सीखना है, समझना है कि जो रिच्ड हैं उन तक पहुंचना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो अनरिच्ड हैं उन तक कैसे हम पहुंचे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमने डेवलपमेंट की पढ़ाई में पुटिंग द लार्ज फर्स्ट पढ़ा, गांधी जी के अंत्योदय में हमने अंत्योदय का सिद्धांत पढ़ा, लेकिन ये शब्दों में समझना और व्यवहार में इसको अमली जामा पहनाना इतना ही अंतर है जितना कि आकाश और जमीन का अंतर है। और उसके बीच यदि गैप कोई पाट रहे हैं तो वो सिफार की टीम पाट रहे हैं। एक बात मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा इस बात के लिए कि 10 स्टेट में, भारत के महत्वपूर्ण 10 स्टेट में अनरिच्ड तक पहुंचने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, that is very very important, immensely helpful for the people। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सरसाइज है जिसको कि हम 2 दिन में सीखेंगे, समझेंगे और चिंतन करेंगे और मनन करेंगे और कैसे इन चीजों को एडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे इस मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, कैसे इसे स्केलेबल बना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे दोनों टीम के साथियों से है कि सिफार के लिए जो 10 स्टेट में इनका काम चल रहा है और ऐसे जगह काम चल रहा है जो कि बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, वल्नरेबल सेक्शन है, वहां तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए एक बार खड़े होकर जोरदार आवाज से आप ताली जरूर बजाएं। खड़े होकर आपके पास जी रहेंगे, कॉफी टी के लिए शक्कर भी मैम दिस इज योर ब्लेसिंग, योर काइंड ब्लेसिंग। मैं अपने साथियों को बताना चाहूँ कि एक बार 1 अप्रैल को इस बार जो हमने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत किया, अखिला मैम के धमाकेदार अंदाज से शुरुआत किया, उनकी मधुर वाणी से हमने शुरुआत किया था और हमारे टीम अमेज्ड हो गए थे। उन्होंने भरपूर हम लोगों को गाइड किया, मोटिवेट किया और मैं वो लग था
या किस्मत था या भगवान का दिया हुआ कोई संदेश था, आपने एक अप्रैल को ऐसा पैटर्न थमाया कि आज तक हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। अब ये प्रोजेक्ट, अभी वो प्रोजेक्ट, अभी इधर जाना, अभी उधर जाना। तो ये कहा गया है ना कि सैले सैले ना मानक्यम मोक्तिन न गजे गजे, साको नहीं सर्वत चंदन न बने बने। हर एक जंगल में चंदन की लकड़ी नहीं हो सकती, हर एक हाथी में गजमुक्ता दांत नहीं हो सकता, हर एक पत्थर में मोती नहीं हो सकती या मणि नहीं हो सकती। कुछ बिरले लोग होते हैं और ऐसे बिरले लोग का अगर एक सानिध्य मिल जाए तो उससे व्यक्ति में एक अलग ही पहचान हो जाती है, अलग काम करने का एक तरीका बन जाता है। तो वही हम लोग एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक फैंसा की बात है, हम पिछले 2 दशक से हम इस काम में लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि नाम तो हमारा बड़ा है, लेकिन मैं रियली अगर हम ट्रांसपेरेंट वे में बात करें, हमारा काम उतना बड़ा भी नहीं हुआ। फ्रेश वाटर एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया, कितना बड़ा सुनने में लगता है कि साउथ एशिया का कोई ऐसा फ्रेश वाटर एक्शन पर बहुत बड़ा काम करने वाले लोग हैं। मैडम, विजन हमारा बहुत बड़ा है। ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, due to lack of network, due to lack of so many things, we people are not doing so much what we people are want to do. So this is our inner desire, this is the desire of the Pensa network, that we should go ahead, we should go far ahead. हम ऐसे लोगों को हेल्प कर सके, उनके साथ मिलकर काम कर सके कि आप समझे कि एक गिलास अगर अच्छी पानी हमें मिलता है तो हमें कितना सुकून मिलता है। और कुछ ऐसे बस्ती हैं जहां हम शुद्ध पानी की बात ही न करें, वहां पानी नहीं पहुंच पाता है। एक दिन यदि हमारी मोटर खराब हो जाती है या पानी की सप्लाई रुक जाता है, घर में एक हाहाकार सा मच जाता है। और कुछ ऐसे जगह हैं जो कि 10 किलोमीटर दूर से वो पानी ला रहे हैं, इसको कौन दूर करेगा? इसको हम लोग सोशल वर्कर ही दूर करेंगे। हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का कहीं न कहीं एजेंडा साफ है। इसीलिए आज हम एक प्लेटफॉर्म पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में जितनी हमारी पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल से हम बढ़कर होगा। हमारे पोटेंशियल यदि 5 कदम चलने की है, हम 6 कदम चलने की कोशिश करें। यदि 5 गांव में काम करने की पोटेंशियल है, हम 6 गांव में काम करने का प्रयास करें। यदि 50 परिवार को हम अच्छे से जोड़ सकते हैं तो हमें 100 परिवार को जोड़ने चाहिए। जब हम छोटे-छोटे स्टेप लेंगे तो बड़े स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। कंटेक्स्ट सेटिंग में मुझे 2-3 बातें केवल रखनी है कि आज जो हम 2 दिन सीखेंगे, इसमें सबसे पहली बात हम सीखेंगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब केवल ये कतई नहीं है कि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट, we should be accountable for our natural resources। क्या हम नेचुरल रिसोर्सेज के प्रति अकाउंटेबल हैं? यदि हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें आत्मसात करना चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि how we should be accountable, we should be very transparent as well। हम दूसरे को तो बहुत सीख देते हैं कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्या हमने वो गुण अपने में अपनाया है या नहीं अपनाया है? We should be very good communicator। अगर हम एक अच्छा संदेश वाहक नहीं हो सकते, अच्छा संदेश और संप्रेषण नहीं कर सकते, हमें कोई कम्युनिटी ने बुलाया नहीं है, हम उन पर बोझ बनकर गए हैं। जब तक उनके हम मित्र बनने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो हमें क्यों अंगीकार करेंगे, क्यों हमें वो अपने काम से जोड़ेंगे? तो हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आए हैं, ट्रांसपेरेंसी सीखने के लिए आए हैं, अकाउंटेबिलिटी सीखने के लिए आए और सीखने के लिए आए हैं लीव नो वन बिहाइंड का आखिर कांसेप्ट है क्या, कैसे ये कांसेप्ट कारगर होता है, कैसे समाज के सभी तबके को हम इसमें जोड़कर देख सकते हैं। यदि हमारे में ये गुण आ जाएगा, हम समझें कि वाटर सैनिटेशन हाइजीन के ऊपर काम करने के लायक है। SDG 6 इतनी बड़ी-बड़ी बातें हैं उसमें, मैं कहता हूं वो सारे फिलॉसफी को हम छोड़ दें, केवल अपने घर से जब निकले अपने पास पड़ोस तक यदि हम कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि SDG की हम बात करने के लिए आए। लर्निंग और शेयरिंग का एक ही अर्थ मेरे समझ में आज तक आया है कि हमने जो कुछ लर्न किया, अपनी गलतियों से सीखा, वो गलतियां हमें बताने हैं दूसरे को ताकि वो गलतियां ना करें। और यदि हमने कुछ अच्छे चीज किए हैं, वो अगर हमने सीखे हैं, उससे मोटिवेट किए हैं, वो हमें शेयर करना चाहिए ताकि अगले लोग उनको बिना समय गवाए उस मॉडल को अपनाएं और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। तो इस लर्निंग शेयरिंग में हम लोग 2 दिन ऐसे ही करने का प्रयास करेंगे कि क्या हमने गलतियां किया उसको खुलकर बात करनी है ताकि उससे हम रास्ता निकाल सकें, क्या हमने अच्छा किया है उस पर हमें बात करनी है ताकि उस मॉडल को हम रेप्लिकेट कर सकें। और हमारे एक से एक दिग्गज आएंगे, हमें अपने पूरे साथियों से ये हम आह्वान करते हैं कि हमें एक ऐसा बिहेवियर शो करना है कि एक लर्निंग एटीट्यूड हमें दिखानी है ताकि सिखाड़ के एक से एक अच्छे लोग, एक से एक प्रोफेशनल उसमें बैठे हुए हैं, उनको लगना चाहिए कि इतने ट्रेनिंग हमने तो कराया ना, लेकिन ये जो डॉक्टर सीताराम जी की अगुवाई में जो टीम आई ना, वैसी टीम हमें दोबारा मिली नहीं। पीसी मिश्रा साहब की अगुवाई में जो टीम आई वो मिली नहीं।
तब मैडम हमें जयपुर बुलाएंगे, तब मैडम फिर हमें अलग जगह बुलाएंगे, कई जगह बुलाएंगे, और इसी में यदि हमने उनको उबाल दिया, टाइम को हमने मेंटेन नहीं किया, तो फिर हमारा प्रोग्राम सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो एक ही मेरा विनम्र प्रार्थना है, हम एंजॉय भी करें, लेकिन टाइम के लिए हम कम चल रहे हैं। स्टेज से जो टाइम जो ही में यहाँ से घोषित करेंगे उतना देर में लंच करके आ जाना है, फिर विजिट में हमें जाने हैं, फिर विजिट में भी अच्छी लर्निंग लेनी है। कल जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा उसमें भी हमें अच्छी लर्निंग लेनी है। विशेष में कुछ नहीं कह सकता, नहीं तो बात की बात चलती रहेगी। मैं समय की मर्यादा को समझते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ एक प्रार्थना के साथ। वो दो पंक्तियों में प्रार्थना है, वो हमारी जो प्रार्थना है, आपसे जो अपील है वो दो पंक्तियों में है, और ये दोनों टीम के लिए है, और ये उदय भले बोल रहा है, लेकिन ये अखिला मैम के तरफ से आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ कि मुड़के न देव न शामिल हो गुनहगार में। ऐसा नहीं है कि वाटर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं तो हम भी उसको नगार होते चले जाएं, चलते चले जाएं, नेचुरल रिसोर्स को हम भी विकृत करते चले जाएं। मुड़के न देव न शामिल हो गुनहगार में, सामने देव तेरी मंजिल है सितारों में। मुड़के न देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख तेरी मंजिल है सितारों में। ये जमाना कब बदला है तो जमाने को बदल, ए मेरे साथी चल, ए मेरे साथी चल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस व्यक्ति को आपने इतना अवसर दिया इस पोडियम पर आकर, और भुवनेश्वर जैसे पवित्र धरा से मैं दो शब्द रखने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी का तहे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका लाइफ सुखमय हो, खुशमय हो, और शांतिपूर्वक आप लोग आगे बढ़ें और तरक्की करें। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर डियरेस्ट अखिला मैम जी। अखिला मैम को बुलाने से पहले मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इनको बात को आप सुनिए। उदय ने जो बोला वो शब्द बोला, मैडम जो बोलेंगे वो व्यवहार बोलेंगे, उनका एक रिफ्लेक्शन होगा, उनका वर्क बोलेगा, उनका एक्शन बोलेगा। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप अखिला मैम की बातों को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मैम फोरम फॉर यू, आप जैसा चाहें उस तरह से इंट्रोडक्शन आप करवाएं, जिस तरह से चाहें आप लर्निंग से करवाएं, तो फोरम फॉर यू मैम। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अखिला मैम विद अ बिग क्लैप। आप जोरदार ताली। ओके, थैंक यू। पीछे के टेबल से हेलो, आप लोग से शुरू करें। इज देयर अ माइक फॉर दिस? यस अपना परिचय भी दीजिए, और मतलब आप 2 दिन से क्या मतलब आपका एक्सपेक्टेशन है वो भी थोड़ा बता दीजिए ताकि सबको they put it all together, the expectation. Hi, good morning everybody. Myself, Dr. Mazhar Rashidi. I am a Chief Executive of Fraternity. Fraternity is a group of participating practitioners working in North India last 25 years. And also after doing that, I am a national co-convener of FENSA. And my expectation from the workshop, how to localize SDG, how to localization SDG, what is the framework of localization SDG at the ground level? So I know I would like to understand by today. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र जोशी है। मैं उद्गम ट्रस्ट गुजरात का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और फैंसा इंडिया में नेशनल को-कन्वीनर हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग SDG 6 में यूथ के साथ जोड़ के कैसे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, और हमको, क्योंकि अभी हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्कशॉप किया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं और जानना चाहूंगा कि उसमें हम लोग यूथ को जोड़ के कैसे एज ए मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुजरात में कहाँ है? मैं गांधीनगर बेस्ड हूँ, गांधीनगर कैपिटल में बेस्ड हूँ। Myself, Governor Sir. Our organization is लोकशक्ति विकास केंद्र पुरी, उड़ीसा में काम कर रहे हूँ। हम चाहते हैं कि जो SDG 6 जो कहते हैं वो वुमेन के साथ इम्पैक्ट हो। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं बता पाया, मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं उदय शंकर और विश्व केंद्र में चीफ कंट्रोलर हूँ, और विश्व केंद्र एक जानवी सुंदर प्रांगण है जहाँ आप लोगों का आना रहा है। अब जब आएंगे तो हम जो स्वागत करेंगे वो 2 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे।
मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें सिर्फ इतनी है कि चूंकि विश्व केंद्र मोर देन 1000 एनजीओ के साथ काम कर रही है और 25 स्टेट में काम कर रही है और युवाओं पर काम कर रही है, तो इस युवाओं का लिंकेज एसडीजी 6 के साथ कैसे हो सके और हाउ यूथ कैन प्ले immense role or pivotal role in setting SDG and realizing the SDG 6. Thank you so much. Thank you. Myself, C. Molly, Odisha chapter Pansa. We are working in Sambhalpur district in a remote tribal belts, and we see there are so many issues for tribals. One of them is the right-based issues. We have been working like trafficking, sensitive issues, and other issues also. And my expectation is what will be our strategies to take to solve the water issues in the remote province. Thank you. मेरा नाम प्रतीक कुमार महारा है और मैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोलू से आकर सर और मैं उसका चेयरमैन हूँ और उड़ीसा स्टेट का मेंबर हूँ। हम लोग कोरापुट में ज्यादातर काम कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए और वहाँ पे जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है अभी उनके पास पानी और सैनिटेशन का फैसिलिटी नहीं है, तो SDG 6 में जो मीटिंग है उसके लिए क्या हो सकता है और जो दूसरे स्टेट के लोग आए हैं उन लोगों ने क्या कर रहा है उसको अच्छे काम को कैसे हमारे फील्ड में रेप्लिकेट किया जा सकता है उसको मैं ये प्रोग्राम से ये उम्मीद करता हूँ। Namaste. Myself is Divakar Saur. I am from Odisha, Balasore district. My organization name is the welfare. The welfare is working for the PWDs, especially for their education and their works program. क्या expectation? Hello. Your expectation? We are taking their sanitation and education. वर्कशॉप से क्या क्या उम्मीद रखते हो, क्या सीखना चाहते हो? Before the COVID, there are 20,000 pension holder. We have within the COVID period, we have made 25,000 plus. Very good. सबको नमस्ते, मेरा नाम अंबिका प्रसाद मिश्रा जी, मैं उड़ीसा का रीजनल जिला से बिलोंग करता हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन नाम है आशीर्वाद और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। काफी दिन से संसद चैप्टर से जुड़े हुए हूँ। अभी हमारा जो काम चल रहा है उसमें हम जो काम करते हैं हम जो ऑर्गेनाइजेशन करें जो राष्ट्र के काम कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि महिला का आदर बढ़ता है और उन महिला के लिए और यूथ के लिए SDG 6 में आगे क्या कर सकेंगे उनको लेकर हम क्या आगे बढ़ सकेंगे इस वर्ष में है। मेरा नाम प्रताप राव, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट काम करूँ ऑर्गेनाइजेशन नाम है और वाटर सैनिटेशन पर मेजर हम काम करूँ केवल 22 इयर्स फ्रेंड्स से हम जड़ित आमर जो लॉबी आर्गेनाइज प्रोग्राम रिसेंटली जो प्रकार लॉबी आर्गेनाइज प्रोग्राम करते फ्रेंड्स तेणु से आमर ऑलरेडी सक्सेस हुआ जे और ट्यूबवेल्स रिक्वायरिंग एंड ट्यूबवेल प्लेटफॉर्म इज कंप्लीट ऑलरेडी वर्क प्रोजेक्ट और ट्यूबवेल सेकंड प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रोसीड डिस्ट्रिक्ट लेवल वीडियो एग्रीकल्चर कांटेक्ट किया इसलिए काम करते हैं और ये प्रोग्राम का असली जो लॉबी आपस प्रोग्राम पे फोकस करेंगे और प्रेशराइज करके काम करेंगे इसलिए ये प्रोग्राम है। I am Prasanna Kumar, Secretary Political Committee, the Scholar Nayara District. Our organization is working the right for children, women, students, and senior citizens in the district level. We fought for the senior citizens in the scholar of the senior citizens are
not less than 600 something. And we also provide them 16, 17 members with the aids of the government, that housing service, sanitation service, water supply service, and also ration service. And we are in future we will also work for them and provide them a better result in past programs. Thank you. Yes, I have been some governments, I have social since women involvement, there are so many things we tried in our area. In Delhi area, there was problem to teach water. Trying to solve that one, but it is, I think, very difficult to solve that context. I want to get some knowledge from this also, that how to solve it. Especially for the community. Yeah. सभी को जोहार, मेरा नाम संजीव है और मैं झारखंड से हूँ, फेंसा स्टेट कन्वीनर के रूप में हूँ और मुझे जो सीखना है यहाँ पे SDG 6 के प्रभाव और युवाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो और उसका मूल्यांकन की पद्धति को हम सीखने का प्रयास करेंगे 2 दिन में। धन्यवाद। महिला है पांसा में सीखना चाहते हैं महिला के साथ कैसे काम करने के बहुत मौका गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनुरा सुल्तान टुडू है और मैं झारखंड से हूँ। मैं यहाँ सीखूंगी, जो सीख के जाऊंगी वो गांव में जाके सबको बताऊंगी कि मैं यहाँ क्या सीखी हूँ। थैंक यू। सभी को जोहार, मेरा नाम है मनोज खुशबू, हम झारखंड से हैं और यहाँ हम 2 दिन जो सीखेंगे अच्छा से सीखेंगे और गांव में जाकर के जो युवा है उसके बीच में इसका जोरदार प्रचार प्रसार करूंगी और उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरा नाम माता हंसा है, मैं झारखंड से हूँ और मैं महिलाओं के बीच में काम करती हूँ। तो यहाँ से जो भी हम सीखेंगे, विशेष करके पानी शुद्ध कैसे रखेंगे, इस पर हमारा झारखंड बहुत पीछे है और इस पर हम चाहते हैं कि वहाँ पहले तो पानी की ही व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ देखने से गांव में बहुत सारे ऐसे अवस्था है जहाँ शुद्ध पानी की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से सीख के गवर्नमेंट के साथ प्लस आंसर के साथ जुड़ के उसको और सही बना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं तेलंगाना से, फाउंडेशन फॉर वुमेन डेवलपमेंट। हमारी संस्था में वुमेन्स डेवलपमेंट, गर्ल्स गर्ल्स पर्सनल हाइजीन, उसके अलावा अदर्स कोविड-19 में भी काम कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ अब SDG में मैं सीखने के लिए आई हूँ कि वुमेन्स एंड गर्ल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ में स्टूडेंट्स को भी हम लेके वाटर पे और पर्सनल हाइजीन पे हम क्या काम कर सकते हैं और साथ में गवर्नमेंट से उनसे हम क्या सपोर्ट लेके काम करेंगे, ये सीखने के लिए मैं आई हूँ। थैंक यू। Good morning all. Myself P. Rashnikant, हमारी NGO से हैदराबाद तेलंगाना। So हम लोग स्कूल्स में वॉश के ऊपर बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल्स। अभी SDG 6 में वो जो लर्न करने हैं वो स्कूल्स में जाके इम्प्लीमेंट करना, बच्चों को कैसे सिखाना रिलेशन टू चिल्ड्रन। सो कैसा रहता अच्छा रहता है और स्कूल्स में भी कैसा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सांबर शिवा है, मैं मॉडल आर्किटेक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मारी की जानिब से हूँ। पिछले 1-2-3 साल से हम कोविड-19 के ऊपर ज्यादातर काम करें और हमारी जो वॉश में भी अभी काम चल रहा है
फिलहाल अभी यहाँ ये वर्कशॉप में 2 दिन के लिए हम ये ट्रेनिंग क्लासेस में हैं। अभी हमारा ग्रेटर हैदराबाद में भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी इसके अंदर ज्यादा बदलाव लाना है और कुछ यहाँ से सीखे। अभी रिसेंटली हमारा एक बड़े म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कल परसों में वहाँ के मेयर और वहाँ के कमिश्नर से बातचीत की। वहाँ के लिए मुख्य पानी के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में और वुमेन के बारे में और एजुकेशन के बारे में यहाँ जो सीखूंगा वहाँ मेरे तरफ से जितना होगा उतना वहाँ बदलाव लाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hi, good morning to all of you. My name is Mohammad Abdul. I am from APPC Hyderabad. It is an organization of entrepreneurs for youth and women also. I will be applicating for this SDG6 in the schools and minority schools, like there will be no hygiene properly. With I am collaborating with the GHMC also in further details and very helpful to you. So thanks for the CFR and Maria Torres. Good morning, Madam, and all of our participants. We are from Andhra Pradesh and belong to Nellore district. Initially, regarding the implementation of wash program, but in coastal area, we have covered 40 schools. The wash activities as in the part of school safety plans and at the same time disaster management also. But apart from that, under ODF program, we have facilitating the communities to get the construction, the convergence of RWs and the Panchayat Raj department, 6,500 toilets in our coastal area. Apart from that, our expectation of this workshop, how to localize it under SDG 6 regarding the particularly children and girls at the school level and at the same time in that community level also. Thank you. Good morning to all of you. My name is Srinivas Chekuri. I am the chairman of NGO called Ramadaya Trust, and also currently I am the state convener for Mansa, Andhra Pradesh chapter. So we have been planning, executing, implementing wash activities in our state, particularly in Andhra Pradesh, in association with the various government departments. And IAG was the UNICEF, water, our CSOs are very active in Andhra Pradesh. I would like to know what is the additional learning from here in the state, particularly in Odisha. And localizing SDGs is itself a big word. What does it mean actually? So it is a universal objective, but it has been done across the world as people pursue differently. In Andhra Pradesh context, it may be different. And what is the prevailing context in Odisha, how it is impacted, and what is the perspective of different stakeholders, like the CFR, how does it look localizing SDGs in a broader perspective? Is it only fixing a tap or building a toilet, or it is beyond that? What will be the additional learning and innovation here that can be learned by all of us? And it can be some of these unique things can be taken to our state. So thanks for providing this great opportunity for Mari and the CFR and other agencies. We look forward to a greater learning. Thank you so much. Good morning. I'm Meera. I work with Women's Initiatives. We are based in Tirupati, Andhra Pradesh. We have been working with marginalized groups of people, especially women, children, and elderly across districts and states. We have networks of sex. We work with networks of sex workers and other marginalized sections. WASH issue has been the most neglected in most of the community-based organizations. My interest in attending this workshop is to see how we could incorporate the learnings that is happening here to the district level, at the district level, at the state level, and see
all the CEOs with whom we are in touch with takes this up as a priority issue. Everybody, see, recently we had a workshop, there was a very good response from the communities talking about the gaps and the needs. But how do they respond? How does each individual at the community level should take up the responsibility? At the same time, fight with the government to get the space to express themselves. Unless government gives the space, there is no point just talking to the communities and saying, oh, you have a responsibility, you are the right person, things like that. So my interest here is to pick up the learnings, to make it workable at our level and see that fans are AP and fans are India makes a difference. Thank you very much. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు రాజారావు. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఏలూరు నుంచి రావడం జరిగింది. మా ఆర్గనైజేషన్ పేరు సేవ సోషల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వాలంటరీ యాక్షన్. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజారావు. అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఫార్మర్స్. మేము రైతులతోటి పనిచేస్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా ట్రైబల్స్ తోటి కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా రైతు యొక్క కార్యక్రమాలు, ఫార్మర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా రావడం గల కారణం ఏంటంటే సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఏ విధంగా మీరు ఇక్కడ చేశారు అది నేర్చుకొని మేము జేజేఎం ప్రోగ్రాంలో మేము ఎంఓజీ ఎంటర్ అవుతున్నాము. ఇది నేర్చుకొని అక్కడ మంచిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రావడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంగ్లీష్లో చెప్పంటారు అవసరం లేదు. Good morning, all of you. My name is Ramamurthy. I am from Andhra Pradesh. My organization is Society for Social Welfare, Education and Environmental. That's a sweet. We are working with Adivasis and fishermen area for 30 years. Basically, with support of UNICEF, doing wash activities in 50 schools and then 3 mandals with 34 panchayats. Possible. Then ODA factory also previously with support of UNICEF and other departments. So this workshop how to institutionalization of wash activities. That's the main. Then on one more thing, I'm a state coordinator and right education forum also in Andhra Pradesh. We're doing with education activities also. Translate with what? I understood, but for best just for their benefit, we will not Actually, just I want to know safe drinking water, how we have done here and how to implement in our state. Particularly, I am going to enter into MOU with the state government, JLM project. So just I want to learn how you have done here. Yes. That is the only thing. As a KRC or as an ISA? ISA. ISA. We charge them to after that. What is an MOU? What else can they? My name is Purnachandra Mishra, and I have been associated with the FANSA since its inception. Sorry. My name is DC Mishra. I never call full name people. And and I belong to an organization called Indian Institute of Youth and Development, which started in 1978. And since most of the people from Odisha know it, but I just want to tell you that since Vishwa Yuvakendra is here, so after my post-graduation in economics, I got a government job. And unfortunately or fortunately, I went to a training program in Vishwa Yuvakendra for 15 days. Then I decided to resign. And then I started the organization, and since then I have been working. Let me straight come to the wash sector.
when in 1978 we started as a training institute. We were providing training and promoting organizations mostly in Odisha. Yes. And I was a program officer in Vishwayodendra for 3 years on deputation from the government again. Then I left. So when we started in 90s, I tell you, since we are all working in the field of WAS, when we started doing this, in those days, there were no such awareness program, only construction work. The reputed organization like Water, they were not doing anything on that, just digging tube wells and then toilets, construction toilets. We were called untouchable. We were called, just like sanitation workers you will call as untouchable, we were also called CSOs as untouchable. So that inspired me to continue with that. Let us become touchable, and now we are in the touchable group. And I remember, two things I'm happy with. There is more touchable and less touchable. So this was the attitude of NGOs and CSOs those days. Now there is a tremendous change. And now I am very happy because FENSA is headed by Vishwayodendra and Uday Shankarji is taking lead. I feel it is my school. After my, what we call, my education over, I started this school in the social work from there. And second thing, I am very happy because when Samir, when we were having program, you are sitting in the last bench. He was very silent. He's a silent worker. He was working in, if I'm wrong, correct me. He was working in Gajpati district. I picked him up towards the end of the project. He stayed in our office and then started working. Now he is at, this is the two things I'm happy for. And my expectations, I'm not going, I have written some books on Odia mostly supported by Water. And when I am associated with FENSA, FENSA has given me a lot of opportunities. I have worked for FENSA. At the same time, they have given me a lot of opportunity. I was the first national to come here, and by that opportunity, I could know all the states. I went around the state, resolved the issues, restructured the organization, a lot of things were done. Now we are in 12 states. Beginning, we were in 4, Karnataka, Sitaram, me, Odisha, Murali, at that time Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is not functional nowadays. But from 3, we have come to 12. And now Uday Shankar is taking to 3 more states. In the Northeast, we are going, next step is for that. So, coming to the learnings from here, we have been since the last 4 or 5 years. I should say personally, I have a weakness. After working long period in this field, I found only constructing toilets, supplementing government work, say, Hanji, respected sir, due respect, the humble submission, I beg to state, these nonsense things will be stopped. So I started. I tell you, when you say dear sir, they don't like. You have to say respected, due respect and humble submission. I beg, all these words should be removed. And then the CSOs should come. And I tell you one thing, then I started translating. I'm not expert in words. Translating some books, around 25 books we have brought out. And mostly in Odia. And the next one that we are going, we were planning, he is our best friend, and he has now supported. We have written some book on human rights to water, how to do about this, and especially Odisha context. And the book is already prepared, ready only for editing. Rest the great person who is sitting next to me. I was thinking to start unveil this book here, but it could not be possible. But we will find a different place. So that indicates that how we can go ahead doing this work. My expectation are 2 or 3 things. I'm sorry, I'm taking more time.
Please do. And then I always forget because of my age, so I note. We are working in rural areas, especially in Odisha. My friends will agree, we are mostly working in rural areas. And even in Pensa, most of the members, if I am correct, most of the members are working in rural area. When your organization is working in the urban, unfortunately, I didn't know. I know that somebody is working somewhere. I didn't know, but when I came to know, I'm very curious. Know that how when you are doing something in urban areas, how it could be into the rural areas. The same technology, this some modification tactics. I call it a tactics when you convince the people. That is number one. Number two, the human rights angle. I want to see things in human rights angle. We have done so much. 300. Pratap got a national award for construction of toilets. So he got a certificate and showed me that. I said, it is not a big thing. You should come to the advocacy. Then only things can move. We have money. Government of India has a lot of money, but we don't use it, make proper use of it. Let us do something on that. And I just want to second thing, human rights angle. And third one is, then some of our friends told that the youth focus. See, we are right holders. Government is the duty bearer. Who becomes duty bearer? Who are the students of schools and colleges? Most of the schools was in school is not functional. If I'm wrong, correct me. Most of the schools, especially I can say, exceptionally Karnataka, I have seen in his organization in Bangalore, are doing tremendous work. When I go to Odisha, I found the toilet is not there, it's there, but nobody will go there. If the teachers are not oriented, and the students with 90% and 98% marks, they become officers. And then they become executive engineer, and they don't know what was each. And unfortunately, our government gives the key to them. You handle was in this sector. How can they handle? The same question I raised in the SDG 6, the conference in the US. I raised the same question. That if we appoint someone who doesn't know, who doesn't have the motivation to work, how can he manage the district level? Even in that book also, Sitaram, we have done that one also very well. So my point is, when you say youth, the formal youth sector has to be educated. If you go to a college, know us. If you go to a university, they don't know anything. We had a meeting with NSS volunteers in Niagara. NSS volunteer Youth Red Cross. They don't do. Only hand washing, what nonsense, hand washing. With that it is finished. Hand washing only for demonstration. In the question, you just give tick mark, practically you don't do. So all these, the third point I want to emphasize here is how young people, especially in this formal sector, are educated, motivated. When they go to the job, they will give the service. The gap is now widened, the gap will be shortened. Thank you very much. Give me such a long time. Thank you. Good morning to all. I am Dr. Sitaram, and I am an orthopedic surgeon by training. Orthopedics वाले जब किसी का हड्डी टूट गया तो लोग orthopedics स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ताकि हड्डी सही जुड़ जाए। तो मैं हड्डी जोड़ने का काम करता हूँ। उसी तरह समाज में जो कुछ टूट पड़ा है उसको भी कुछ जोड़ने का या कुछ गलत तरीके से जो जुड़ गया है उसको सीधे करने का काम में लगा हूँ। Incidentally, Mishra ji's organization is called IYD, that is Youth Development. I come from an organization which I was associated since my MBBS days, which is also called Swami Vivekananda Youth Movement. And then we have Uday ji, who heads the Youth Network
So a lot of youth, but then when you look at the north end, there's a lot of white things. So it's sort of misleading. ये नहीं समझना कि जब बाल सफेद हो जाए, youth disappears. So we have good friends here. So वो नहीं होता, हम still youth ही हैं. So when the enthusiasm is high, we are all youth. So that is the message. In terms of enthusiasm is low, they're all put out. yeah, exactly. Exactly. So, in terms of as an organization, we work in multiple sectors. We started off with health and then diversified into basic education, higher education, into socio-economic empowerment, and a lot of other things. And I'm also associated with a few other organizations in which I work in sectors like microfinance, women empowerment, campaigns for community mobilization, etc. And as part of PANSA, I've been with the network as a national convener and then the regional secretariat, as well as a global platform called the Sanitation and Water for All. So I'm a representative of the CSOs from South Asia. In terms of expectations, I have a couple of expectations at a personal level and from the organizational level. Personal level, the most important thing is meeting people. I always emphasize on that. It's been such a pleasure to meet some of the old faces in terms of not age, but already known faces. And then faces to emails and phone numbers. Akilaji had met on online. Julie was just an email ID. So it's such a pleasure to actually see people, meet people directly. Personal as well as organizational expectation. When I first thought of this program, we always have talk of certain gaps, the gaps between the top level policy and grassroots level implementation. Now we have to bridge that. And seeing is believing. Actual going to the grassroots and seeing what is happening is the best way of believing, because that's where we learn. So first objective, personally as well as for the organization as a group, is to go to a place where things are being implemented, understand the realities, absorb the learnings. There's a lot of learning both from success as well as failure. So we cannot really abandon something as failure, because there are a lot of learnings there as well. So learn from there. But at the same time, as part of the program, I was also keen that we link it up to the higher echelons, higher tiers of hierarchy. So we are very happy that the Government of India is also participating. Let's hope that comes through. So from the grassroots to the Government of India level, if we can bridge that, then there will be some component of learning which percolates either way, both ways. The second thing is I believe in multi-stakeholder approaches. So it's such a pleasure getting to know organizations and getting to know member organizations of PANSA. So that sort of interaction is, I feel, very energizing. So the expectation is that at the end of the day tomorrow, all of us would have made more friends. All of us would have learned from each other. The third objective, very important at the grassroots level, is capacities. We have two ends of a spectrum. There are people who are very good in theory, who can sit and talk about policy and write pages and pages of very good theory. And there are people who work at the grassroots. They are not bothered about the theory, they are bothered about the food on the plate of a poor person or clean water in the glass of a poor man. Now there is actually a gap between these two. So I believe that all of us who are working at the grassroots should have a strong theoretical knowledge as well. That is when we will be able to advocate with the policy makers and say that we know our stuff. Don't neglect us. We know our stuff. It's not that we are just doers. We know our stuff. And so the expectation also is that all of us will understand certain concepts, so that when we go back, we look at these concepts being translated into practice. So that sort of makes it complete, makes it whole. So that's what I look forward to. Thank you. Thank you. Back to the table.
सबको नमस्ते। मेरा नाम समीर है, समीर अजय दास। मैं सीखा से 2010 से अभी तक काम कर रहा हूँ सीखा से। सर अभी जो बोल रहे थे कि मेरा फर्स्ट करियर शुरू हुआ था IIT गजपति डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उस दिन से IIT छोड़ने से बाद में सीखा से आज तक 10-12 साल हुआ अर्बन में। एंड नॉट ओनली भुवनेश्वर, इसके साथ साथ भी उड़ीसा के 6-7 डिस्ट्रिक्ट में हम क्लोजली काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड अर्बन लोकल बॉडी के साथ बाकी क्लोजली काम कर रहे हैं, जैसे कि बरहमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बराकम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, संबलपुर, देवघर, पुरी, खोर्धा, इस एरिया में हम क्लोजली अब तक काम कर रहे हैं। तो भुवनेश्वर का बारे में देखेंगे तो एक तरफ भुवनेश्वर में लगभग 435 स्लम है। इस 435 स्लम में 270 स्लम से आज हमारा सीफा का इंटरनेशनल ऑफिसर है डिफरेंट प्रोजेक्ट में। अभी सीफा से भुवनेश्वर उड़ीसा में भुवनेश्वर में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक पाठ्यक्रम जो हमारा अभी जो इस प्रोजेक्ट जो चल रहा है इफेक्ट सपोर्ट में, दूसरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सोशल एंटरटेनमेंट अजिंक्य जी फंडेड, और एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंक्लूसिव सैनिटेशन ST पारेख फाउंडेशन सपोर्टेड, एंड थर्ड है सिक्योरिटी गवर्नमेंट उड़ीसा SSP डिपार्टमेंट से उनकी ट्रांसजेंडर का सोशल इंक्लूजन साथ में उनका बस को एंश्योर करने के लिए। तो बाकी तो 2 दिन में हम पूरा देखेंगे हमारा काम कैसे है। आज ऑटोनॉमी में भी जाएंगे, फिर से देखेंगे जो एडवोकेसी का जो मेन ये है रूरल एंड अर्बन कॉन्टेक्स्ट में। जो सर थोड़ी देर पहले बताया थे जो अर्बन और रूरल में कैसे कर सकते हैं, तो हम जब शुरू किया 2010 से भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम शुरू किया था, इसमें ही शुरू किया था, एडवोकेसी प्रोसेस में ही शुरू किया था। हमारे 2 चीज माइंड में रख के किया था कि जो अर्बन में जो लोग आती है ना, वो रूरल का माइग्रेशन लेके आती है, उनके माइंड अर्बन में है, उनका एटीट्यूड रूरल का, उसको लेके हमने एक उनका मोटिवेशन मोबिलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया ताकि वो गांव में रहती हैं फिर भी शहर के लिए सोचती हैं, शहर में उनका व्यवस्था बनाने के लिए उनका कोशिश है। क्योंकि बहुत सारे लोग में गांव में घर भी है, भुवनेश्वर में उनका भी आधार कार्ड भी है, वहाँ उसके भी आइडेंटिटी में उनका नाम भी है, डिपार्टमेंट का जो रजिस्ट्रेशन जो लिस्टेड होती है। तो वो दोनों को कैसे वो मैनेज करके लेंगे, उसके लिए हम 2-3 साल ऐसे बहुत स्ट्रगल किया, बहुत एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो हम ओनली 5 सेटलमेंट्स 5 वार्ड और 5 बस्ती में काम किया था, आज हम 250% स्लम में अभी काम कर रहे हैं। इवन एक्रॉस सिटी में भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस जो काम को देखा, जो 10, 15, 20 वार्ड में अगर ऐसे हो सकते हैं, व्हाई नॉट 67 वार्ड हो सकते हैं। अभी हम इस प्रोसेस को BMC ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया कुछ जगह में और कुछ जगह में शुरुआत की है। तो अभी हम आज देखेंगे अभी। तो मैम ये था मैंने हमारा जल्दी, बाकी 2 दिन में पूरा हमको सारी लोग को हम बताएंगे क्या क्या चल रहा है। बहुत उनसे सीखने के लिए बहुत इतने साल से सब काम किया है सब लोग को, उनसे भी बहुत सीखना है। तो सारी अपनी को अपॉर्चुनिटी है, सारी कभी मैंने उधर फंसा से जो अभी बहुत सारा हम प्रोग्राम सिटी लेवल में स्टेट लेवल में जयपुर हमारा सीफा तो अंदर में हम उधर जाती है करती है, बट आज है तो बड़ा अपॉर्चुनिटी फंसा से हम मिला कि बाकी स्टेट का आउट ऑफ हमारा सीफा का जो इंटरनेशनल एरिया का लोग भी हम हमारा साथ जुड़ी हुए हैं। हम लर्निंग टू ईच अदर आज देखेंगे, हम भी सीखेंगे, हम भी जो कम्युनिटी लोग कर रहे हैं उनको भी हम दिखाएंगे। सबको एक बार नमस्कार। और इस इवेंट से मेरी बहुत उम्मीद 2-3 है। पहली उम्मीद ये है कि हम लोग जो भी मॉडल, जिसको हम मॉडल कह रहे हैं, जो भी काम हम भुवनेश्वर में कर रहे हैं और जयपुर में कर रहे हैं, जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उस काम को आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके साथ हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। हम जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने सुना था फ्रॉम द ग्लोबल टू द लोकल, अभी हम जो कर रहे हैं फ्रॉम द लोकल टू द ग्लोबल। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग चीजें कर रहे हैं, अगर हम साथ मिलके करते हैं, हर स्टेट में उसको
अपनाने की कोशिश करते हैं तो हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि हम कम्युनिटीज के साथ जो काम कर रहे हैं, खास करके मार्जिनल ग्रुप्स के साथ, उसको हम लोग आसानी से कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत आसान नहीं है, लेकिन इस ग्रुप के साथ मिलकर हमारे लिए प्रयास, आप लोग जो भी कर रहे हैं उससे हमारे जैसे लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हम लोग थियरी एक तरफ रखते हैं, प्रैक्टिस एक तरफ रखते हैं, तो समावेश करने का मिलेगा। और विशेषकर एसडीजी के संदर्भ में आप लोगों ने जो किया है उससे हम लोग जो कर रहे हैं उसको हमें समझाने में मदद मिलेगी। और लास्ट उदय जी ने हम सबको कहा कि सिफार बहुत अच्छा काम करता है। सिफार जो भी काम करता है वो उस कम्युनिटी के बलबूते पे करता है जिसके साथ आप लोग प्लेटफॉर्म मिलेंगे। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि हम उस कम्युनिटी को ना सिर्फ उनकी जो उनसे हम जो सीख रहे हैं तो आप सबके साथ प्रेजेंट करें, पर उस काम को हम बाकी लोगों तक भी लेके जाएं। तो मेरी ये छोटी सी आशा है। आप लोग सब लोग को नमस्कार, मेरा नाम जुगल है। मैं सीफा में 2015-14 से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी मैं प्रोजेक्ट में हमारा डीपेट प्रोजेक्ट में तो जो डीपेट प्रोजेक्ट का जो हमारा एमआईएस है, तो एमआईएस में जो देखते हैं तो जेएमपी होता है। तो जेएमपी लागत में हम क्या क्या सैनिटेशन को इंक्लूजन कर सकते हैं, वो प्रोसेस को असल से मैं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ। और भी ये जो हम जाने फील्ड पे जा रहे हैं, तो फील्ड में भी देख सकते हैं जो कम्युनिटी और स्टेक होल्डर के साथ कैसे वो मिलके काम कर रहे हैं, कैसे दोनों अप्रोच हो रहा है। तो वो अप्रोच को कैसे वो जो गैप भी होता है बीच बीच में, तो वो जो गैप है दोनों मिला के कैसे वो अप्रोच कर रहे हैं और कैसे मिनिमाइज कर रहे हैं, वो प्रोसेस भी हम देख सकते हैं। और जैसे कि साहब जो बता रहे थे, ये कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो पूरा इमीडिएटली सर्विस पाने के लिए चाहते हैं, और कुछ लोग भी है ऐसे थ्योरेटिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहते हैं। बट वो दोनों को मिला के, जैसे वार्ड लेवल में वार्ड कमेटी होता है, तो वार्ड कमेटी में वो सारे चीज आता है, वो जो रेगुलेशन आता है उनको कैसे स्टेकहोल्डर के पास पहुंचते हैं और वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, उनको आसान से सर्विस मिलता है, वो भी हम देख रहे हैं। तो ये फील्ड में आपको जानने का पता चलेगा। तो ये जेएमपी है वो जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम का इंडिकेटर, बहुत ही मुश्किल इंडिकेटर, पर फिर भी एसेंशियल। Good morning, everyone. I'm Ashisha Mehra. I identify myself as a trans woman. मैं ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से काम कर रही हूँ सीफा से 4 साल से। हम लोगों को तो पहले एक्सपीरियंस नहीं था वास्क में, क्योंकि HIV का TI टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट आया है या फिर इनका लाइवलीहुड सिस्टम्स के बारे में प्रोजेक्ट आया है। लेकिन वास्क को लेकर ट्रांसजेंडर को कितना मुश्किल पड़ रहा है अपने लाइफ में, जैसे कि वो लोग दे आर एंगेज्ड विद द सेक्स वर्क के बाद कितना वास्ट, कितना हाइजीनिक मेंटेन होने की इनका बहुत जरूरी है इनके लाइफ में। ये हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट के साथ साथ हम गए देखने में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोग अपना फाइट कर रहे हैं अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये प्रोजेक्ट के सिलसिले ये लोगों ने अभी फाइट करने लगे हैं अपना वास्ट और हाइजीनिक के कारण, कि हम कैसे सुस्त रहें, हमारी कैसे हम हाइजीनिक रहें और दूसरों को भी मतलब सिखाए तो हमारी कम्युनिटी आगे जाए। क्योंकि अगर हम हाइजीनिक नहीं रहेंगे और हम वास के ऊपर काम नहीं करेंगे, या फिर हमारी जैसे कि आप अभी भुवनेश्वर में थोड़ा बहुत इंक्लूसिवनेस आया है, जैसे कि टॉयलेट ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनाया गया है, या फिर हम लोगों ने बीच में सीफा का एक ऑनलाइन कैंपेन था कि साइनेज में हम कंसर्न तैयार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम साइनेज के बारे में बोल रहे हैं, ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन की साइनेज। तो यही हमारा काम है, हम इंश्योर कर रहे हैं इनको कि अपने लाइवलीहुड के साथ भी हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनका बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन वास को भी हमको फोकस देना भी पड़ रहा है। थैंक यू।
यस, जो टॉयलेट साइड है, जैसे कि मेल फीमेल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन मेल में आप ट्रांस मेल डाल सकते हो, ट्रांस मैन डाल सकते हो, या वुमेन में आप ट्रांस वुमेन डाल सकते हो, ताकि अगर वो जो खुद को लड़का की तरह आइडेंटिफाई करते हैं लड़का के टॉयलेट में जाए, या फिर जो खुद को वुमेन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं वो वुमेन से। Yes, not wrong. Good afternoon, everyone. Good morning, actually. Good morning, everyone. My name is Anushka Pareja और मैं इसी साल सीफार से एसोसिएट हुई हूँ। हमारे लिए I think in CFAR as we're talking about putting community at the center of WASH. Community एक monolithic body तो नहीं है, so community में भी हम तरह-तरह के लोगों को देखते हैं. So we have vulnerable people जो part तो लेते हैं कभी-कभी conversation में, लेकिन उनका कभी वो theoretical knowledge जो होती है वो उस बारे में इतना जान नहीं पाते हैं और इसीलिए अपने capabilities को leverage नहीं कर पाते हैं, अपने rights को आगे रख नहीं पाते हैं. So as we talk about learning and sharing, आप सबसे भी हम ये जानेंगे और share भी करेंगे कि हम community के साथ कैसे भागीदारी के साथ हम उनसे भी सीखते हैं और उनकी needs को, उनके differential needs को आगे लेके बढ़ते हैं. और जब हम SDG 6 के बारे में बात कर रहे हैं, हम SDG 5 और 13 जो जेंडर पे है और क्लाइमेट एक्शन पे है, उसके इन्फ्लुएंसेस को कैसे हम एम्बेड करके आगे बढ़ें, ये भी सीखेंगे और जानेंगे. थैंक यू सो मच. सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम रवि किरण है. मैं आंध्रा से हूँ, विशाखापट्टनम से. सीफार में मैं कम से कम 12-13 साल से काम कर रहा हूँ. So यहाँ ही पैदाइश हुई है, यहाँ पे brought up हुआ, born and brought up in सीफार under the छत्र छाया of अखिला जी. And I am taking care of the project in Jaipur. Like Samir is taking care of the project here in Bhubaneswar. I am taking care of the project in Jaipur, Rajasthan. So currently I am working in Rajasthan. So अभी यहाँ आया. So यहाँ पे 3-4 चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. यहाँ पे आज मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ जो भी वरिष्ठ अभी लोग आए हैं, again sir, वरिष्ठ is not in the context of age, in the context of experience. हमको भी अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत सीखने की मौका है, मिल रहा है आज आपको 2 दिन के लिए. Because somebody is working on tribal, somebody is working on youth, somebody is working on sex workers, somebody कुछ लोग ऐसा है कि गवर्नमेंट तक पहुंच गए MOU पे. So this is not a small thing. This is all very great things happening. చాలా పనులు జరుగుతున్నాయి గవర్నమెంట్ వర్క్ MOU మీద వెళ్తున్నారంటే it's a huge thing to learn. So I think these 2 days is like a cross learning from each other. Of course we have done some very good job and we will definitely happy to show you every bit of the work we did. But at the same time we also want to learn from you. आपसे भी हम सीखना चाहते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं. And somehow SDG में सब cross cutting issues है. We can't forget about tribal, we can't forget sex workers, we can't forget SGMs, we can't forget women especially. So I think these 2 days is a good platform for all of us to learn from each other and experiences. Thank you so much. Thank you. सबको मेरा नमस्कार. मेरा नाम स्वागत झंकर मलिक है और भुवनेश्वर में आप सबका स्वागत करता हूँ. मैं पर्सनली डिसेबल के ऊपर काम कर रहा हूँ 4 सालों से सीफार से जुड़कर. तो हम लोग भुवनेश्वर में काम करते हैं. पहले तो जब हम डिसेबल के ऊपर काम किए तो एक ही चीज उनको पता था कि हमें सर्टिफिकेट मिलना है और स्टाइपेंड हमें लेना है. तो ये दोनों चीज के बारे में उनको पता है कि अगर हम डिसेबल हैं तो हमें सर्टिफिकेट के साथ पेंशन दे दीजिए तो हो जाएगा. लेकिन उसके बाद हमने उन्हें बताया कि इसके अलावा भी और कुछ है जो हमें मिलना चाहिए, जैसे कि टॉयलेट एक्सेस होना चाहिए. अगर वाटर पॉइंट है तो वहां तक हम कैसे जाएंगे, या फिर कोई भी मॉल हो या फिर हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं वो कैसे एक्सेसिबल होना चाहिए. तो इसके ऊपर जब हम उन्हें जानकारी दिए तो तभी मुश्किल आए कि हम लोग हो जाता है हमारा, लेकिन उनको चाहिए
जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप टॉयलेट जाते हो ना, हाँ हम जाते हैं, तो कैसे जाते हो ना, घर के जो भी सदस्य हैं उनके साथ जाते हैं। तो उसको आसान करने के लिए कुछ एक्सेसरीज भी चाहिए। तो हमने क्या किया ना, एसएससीपीडी डिपार्टमेंट के साथ बात की, फिर उन्होंने अलिम को जो है आर्टिफिशियल लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, उनके साथ जब बात किए तो पूरे के पूरे व्हील चेयर से लेकर वॉकर और उनको टॉयलेट तक पूरा एक्सेस किया गया। तो इससे हमें क्या किया ना, डिसेबल को भी एक एक्सेसिबल टॉयलेट यूज करने के लिए मौका मिल गया। तो यहाँ पर हमने उन्हें टॉयलेट एक्सेसिबल कर दिए। फिर वाटर के बाद आए, जो वाटर एटीएम हम बोलते हैं कि पिरामल के साथ मिलकर कि वाटर एटीएम को कैसे यूज करेंगे, तो उससे पहले हम एक्सेस ऑडिट किए कि एक व्हील चेयर तक वो जो पॉइंट है वो उनके हाथ पहुंचता है या नहीं, तो उसे भी ऑडिट किए, फिर वो भी हमने एक्सेस किए और उसके बाद टॉयलेट भी। तो इस तरह क्या किया ना, हम लोग सिर्फ स्टाइपेंड के तक नहीं पहुंचे, वहां से एक लेवल ऊपर पहुंच गए, जैसे कि टॉयलेट एक्सेसिबल होना चाहिए, वाटर पॉइंट एक्सेसिबल होना चाहिए। और उसके बाद जो आज हम सब जानते हैं कि वेस्ट एक बहुत ही बड़ा इशू है हर स्टेट में, तो उसके ऊपर जब हमने देखे कि अभी भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेस्ट को लेकर बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप को वो दिए हैं काम करने के लिए, तो उसमें हमने देखे कि डिसेबल को भी कैसे शामिल करेंगे, क्योंकि कचरा तो हर घर से निकलता है, चाहे वो एल्डरली हो या चाहे ट्रांसजेंडर हो, वुमेन मेन सब, तो पॉसिबली डिसेबल के घर से भी कैसे जाएगा। तो यहाँ से लेके ना जब हमने देखे कि एक सानी वॉल में जो हम आज जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें मेंशन है कि कचरा एक दिन में कितने निकलता है एक एरिया से। तो एक महीने में देखा कि ज्यादा है, तो दूसरे महीने में जब देखा तो कम है। क्यों कम है? तो जब बातचीत की कि कुछ पॉसिबल डिसेबल घर छूट गए हैं। क्यों छूट गए हैं? क्योंकि वो लोग सही समय पर नहीं दे रहे। तो वहां पर जब बातचीत हमने किए तो उन्होंने बोले कि जब गाड़ी आता है तो मेरे घर में जो पॉसिबल डिसेबल है वो उसके काम करते करते गाड़ी छूट जाता है, तो मैं कचरा नहीं दे सकता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमने उनके साथ बात किए, तो उन कम्युनिटी से एक सुझाव आया कि अगर गाड़ी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि 10-15 मिनट तक रुक जाए तो हम उसके अंदर लेकर कचरा हम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि कम्युनिटी में कहां पर पर्सन डिसेबल है? तो वहां पर हमने के लिए ना क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोले कि एक कुछ चिन्ह ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी देखेगा तो रुक जाएगा। तो वहां से एक चीज निकल कर आया कि साइनेज का इनोवेशन किया जाए। तो वो हम बीएमसी के साथ बात किए और उसके बाद उसका शुरुआत हुआ और वो अभी धीरे धीरे पूरे एक्ट्रेस भुवनेश्वर में हम काम करेंगे। वो साइनेज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बात इसका 2-3 तरह का होता है। एक साइड बोर्ड है जो रोड के साथ हम लगाएंगे, तो रोड में जो कचरा का गाड़ी जाएगा तो वो वहां रुकेगा, और ये वाला हर घर में हम लगाएंगे ताकि जो गली में जो गाड़ी जाएगा तो ये स्टिकर जिस घर में लगा गया होगा तो वहां पर गाड़ी रुकेगा और उनके घर से कचरा आएगा। जैसे पॉसिबल डिसेबल बेनिफिट नहीं होंगे, उनके साथ साथ जो साइड पे भी है वो भी उनके कचरा को दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग पॉसिबल डिसेबल को इसमें भी ऐड कर दिए। तो अभी धीरे धीरे ये काम कम्युनिटी लेवल पर हो रहा है और हम देखेंगे, और मुझे खुशी है कि आप सबके साथ मिलकर और भी कुछ हम सीखेंगे ये 2-3 दिन में, और आगे कैसे हम डिसेबल को पूरे शामिल करेंगे हमारे साथ, वो कोशिश रहेगा। थैंक यू। I am Sakshi Hassan. I have also joined. Is it audible? Yes. Yeah. Good morning, everyone. I am Sakshi Hassan. I have also joined this year only, and right now I am handling data of Jaipur and Bhubaneswar, both the cities. And as the event is all about localizing, learning and sharing of localizing SDG 6.
But SDG 6 is not independent in itself, or any SDG is not independent in itself. There are many interlinkages between different, or as Ravi has said, that there are many cross-cutting differences. And so today and tomorrow we will learn about how these are interrelated, how there are interconnectedness are there, and moreover, how community is included in this, and how inclusive WASH is there. So we all are expecting many things from these 2 days, and thank you. नमस्कार, मेरा नाम डैनियल है। आई एम फ्रॉम सीफार तमिलनाडु। सीफार में 2006 से हूँ। When you talk about sanitation, the COVID scenario actually gave us 2 things. One is the opportunity, other is the challenge. Opportunity is to build upon what people have already started to talk about. Go beyond hand washing, talk about menstrual hygiene, talk about segregation, using that interest that developed. And thanks to Akila ma'am, we also started trying new things like reaching out to community through online, using WhatsApp calls, Zoom calls, even when there was a COVID protocol. So we had tried new things that we had not done earlier. Challenges would be like what Meeraji had shared. There are areas where they don't have water. Basic facilities are not there, where you cannot insist on hand washing alone. So we need to also look at conserving water, at the same time ensure sanitation. We've been working on urban poor, and many of you from here are from different areas and different populations. So we would like to learn how you are actually addressing those concerns. So that's something that I would like to know. Thank you. सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम ममता सिंह है। जिस सोनिया जी ने बोल रही थी कि 4 प्रोजेक्ट सीफार में अभी हम इम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं, उसमें से जो सोशल इंक्लूजन प्रोजेक्ट है उसको मैं लीड कर रही हूँ। पहले से हम जब ये सोशल इंक्लूजन प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, उसमें ओनली हम लोग ने 15 सेटलमेंट में थे, जो आसिफ गंजी फाउंडेशन सपोर्ट में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फिर जब हम अगेन हमको अपॉर्चुनिटी मिला 77 सेटलमेंट, अभी हमको अपॉर्चुनिटी मिला वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए 123 सेटलमेंट में। ये जो सोशल इंक्लूजन प्रोजेक्ट है, इसमें से जो मोस्ट वल्नरेबल वर्कर्स एंड ग्रुप्स है, जो कि कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, सेक्स वर्कर्स, प्रैक्टिकल्स एंड साइंटिफिक वर्कर्स, ट्रांसजेंडर, उसके बाद होमलेस वर्कर है, उसी को ही हम लोग ने जो कि 5 इंडिकेटर से हम लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो 5 इंडिकेटर से हेल्थ सर्विसेज, livelihood, social security, and food security, and civic amenities. So ये जो हाउसहोल्ड पैकेजेस हम उनको देंगे, ये हम 3 एक मॉडल डिजाइन किए हैं। कम्युनिटी में हम हेल्पलाइन सेटअप किए हैं, और वार्ड में हम लोग ने ई-मित्र सेटअप किए हैं, और ऑफिसर्स लेवल में हम सिंगल ओनर सेटअप किए हैं। सो उसको हाउसहोल्ड पैकेजेस देने के लिए जो हेल्पलाइन सेटअप किया गया है, ये सारे हम इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, और जो 5 इंडिकेटर्स हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये सारे जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उनका साथ में हम कोलैबोरेशन करके भी कर रहे हैं। जो हेल्प डेस्क मेंबर हम लोग ने सेटअप किए हैं, वो भी मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन से पैकेज में ही बिलोंग करते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स का है, क्योंकि इसीलिए हम लोग ने मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप को चुना है वो हेल्प डेस्क मेंबर को मेंबरशिप लेने के लिए, इसलिए क्योंकि वो खुद ही उनका जो इश्यूज है वो जान पाएंगे, उनका कम्युनिटी के बारे में भी वो खुद ही एडवोकेसी कर सकेंगे, उनको डिमांड रख सकेंगे, उनका वॉइस भी जो इम्प्लीमेंटर से वो डिसीजन मेकर है उनका साथ भी रख पाएंगे। सो और दूसरा बात है कि वार्ड्स के बाद हम करते हैं, हम जो हेल्प डेस्क मेंबर से जो हमारा ई-मित्र जो सेटअप किए हैं, हम कोई एक घर के लिए पानी की बात नहीं करते, या कोई 10 घर के लिए हम बात नहीं करते, पूरा हाउसहोल्ड जो है उनको कैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए, या पूरा सैनिटेशन का इंप्रूवमेंट, सैनिटेशन मिल पाए और सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल पाए, पूरा ये हम लोग ने प्लान करिए, ताकि क्योंकि हम एक घर को या 10 घर को पानी, अच्छा पानी देंगे तो और जो हाउसहोल्ड रुक जाएंगे, तो ये मतलब नहीं होता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हम देंगे, तो इसीलिए हमारा थैंक यू। तो कल मैं सुबह जा रही हूँ 8:30 बजे, किसी को आना है तो जरूर लॉबी में मिलेंगे, वी कैन आल्सो हैव अ फील्ड विजिट देयर। उनका खुद का अलग किस्म का सिंगल विंडो है,
to what extent? Anybody is interested? सभी को मेरा नमस्ते मेरा नाम चंद्रमणि समुद्र है मैं सीखा ऑफिस में काम कर रही थी 6 मंथ के लिए वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट में ऑफिस में साथ में वहाँ सैनिटाइजेशन पे काम कर रहा हूँ 2 महीने के लिए तो मैं एमएस पे काम कर रहा हूँ थैंक यू Is there a tea break? Now, I think we need a break. Okay. तो हो गया Just a ब्रेक नेचुरल ब्रेक Yes.
करीबी झारखंड जैसी जगह हम गए नहीं, काम शुरू भी नहीं किया है, तो we really value this learning from all of you. दो तीन चीज मैं बताना चाहती हूँ। उसके पहले ये बताना चाहती हूँ कि मारी और फांसा के साथ हमारा पूरा बहुत पुराना रिश्ता है। This is not a new, association. मारी के साथ तो हम 2004-05 से हम काम कर रहे हैं। वारंगल में उनका पूरा HIV प्रोग्राम के साथ हम जुड़े हुए थे। बहुत ही we were very impressed, बहुत disciplined, बहुत systematic, और जो सेवा देना है वो पूरा मतलब सही ढंग से एक मतलब औपचारिक एक पूरा व्यवस्था के साथ देना है। एंड लेटर जब हम लोग ने वॉश का प्रोजेक्ट शुरू किया था, सैनिटेशन प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो पहले शुरुआत में 2012 में early discussions were with FANSA, पर पता नहीं उसके बाद हम सुने नहीं। नेटवर्क अभी उदय बोल रहा है कि नेटवर्क भी थोड़ा डिम हो गया था। We didn't hear anything, there was no connection, there was no connect going on. फिर अभी कोविड के पहले एक बड़ा सा मीटिंग था ऋषिकेश में, जहाँ पर स्वागत और संजना हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ पर अपने बात रखी। So it's an old association. So when I spoke to you in Vishnu Yoga Kendra, I was not coming कि कुछ पता, I mean I wasn't coming out of any sort of out of the blue. हम जानते थे, इसलिए मैंने अपना पूरा बात आपके सामने रखा उस दिन. And after that we have been in connection or contact with each other. ये पूरा मतलब क्रेडिट छोड़ देता है। और वैसे भी नहीं है कि जो भी हम कर रहे हैं वो जो भी वो कर रहे हैं एक दिन में सब सॉल्व होगा या एक दिन में वो मिलेगा, ऐसे भी नहीं। और बात ठीक से रहना पड़ता है। जब हमारे साथ चलते रहते हैं, and there's so much trust and there is so much of जो कहते हैं ना emotional intelligence, उनको पता है कि उनका जमाना आएगा, उनका टाइम आएगा, टाइम का कोई वो नहीं है, जल्दी नहीं हो जाएगा। उनको मतलब डट के रहना, और शहर में खासकर कोई भी नेटवर्क बना, एक भी नेटवर्क को मतलब खत्म करने नहीं देना, कहीं काम पर आएगा वो नेटवर्क। So for them people matter, कोई भी आएगा people matter, तो people को कभी मतलब वो नजरअंदाज नहीं करते। जो भी आते हैं उनके मतलब फैमिली में, उनके फोल्ड में ले लेते हैं, उतना वो मतलब मेच्योर है as people. Now we come to the issue of what are we going to show you, and what are we, why did we, ये वाला जो हम लोग भी spontaneously suggestion किया था कि आप आइए, आप आके देख लीजिए जो हम काम कर रहे हैं। और उदय जी ने तो बहुत बड़ा चढ़ा के बताया कि ये लोग ने बहुत काम किया है। Nothing like that. It's जैसे सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी किया है। और हम लोग ने बहुत पहले हम लोग ने सोचा था early 2000 में कि अर्बन पुअर के साथ काम करना है, और उस टाइम बहुत कम मतलब डोनर्स भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। पूरा उनका पूरा फोकस वाज ऑन रूरल। तो धीरे धीरे हमने अपना मतलब समझ लीजिए अपना यूजफुलनेस, अपना यूटिलिटी को बढ़ाया और डोनर के पास गए और अर्बन पुअर को ऑर्गेनाइज किया। सो लिटिल बिट ऑफ दैट यू विल सी कि अर्बन कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या मोबिलाइज किया। I will be followed very soon by my colleague Shruti, वो अपना recorded presentation आपको सामने रखेंगे, पूरा हमारा अप्रोच के बारे में बताएंगे, और वो आप फील्ड में भी देखोगे। That will be followed by Dr. Sitaram and Sakri
briefly introducing कि SDG 6 क्या महत्व है, and then with that आप field में जाओ। तो इसमें 2-3 urban context में and wash context में उदय ने बोला था कि ये बहुत ही व्यापक issue है। This is not an issue that can be easily addressed, क्योंकि आप कुछ भी छेड़ो, कुछ भी साथ में काम करो और कुछ मतलब प्रॉब्लम निकल के आता है। एंड वेरी ऑफन हम लोग मतलब उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम इज वन ऑफ पुअर एंड रिच, इट इज वन ऑफ यू नो कि जिसके पास घर नहीं है, एसेट नहीं है, टैप नहीं है, पाइप नहीं है, एंड द पीपल हु हैव एवरीथिंग, but that is only a small part of it. The poor and rich is only one part of it. सबसे इम्पोर्टेंट है इस द डाइवर्सिटी। एक काम इस मुद्दे पर काम करना है, then you have to understand diversity. जो आशीषा बोल रही थी अपने लेवल पर बोल रही थी, but they have done much more. And in 2018 जब हमने पहले वर्ल्ड टॉयलेट डे में ऑर्गेनाइज किया था, पूरा भीड़ वहां पर ट्रांसजेंडर का भीड़ पहुंच गई, यू नो, अपने बात रखा। पहले बार मतलब द पॉलिसी मेकर्स वो का ऐसे इनको तो कभी देखा ही नहीं, इनके बारे में सुना ही नहीं, and after that there has been no stopping. It has been just going from strength to strength. Orissa and to some extent even Andhra is leading the whole mainstreaming of transgender in WASH, and it's being done from the top. ऐसे नहीं कि you know छोटा-छोटा incremental वाला नहीं, ऊपर से वो पूरा कर रहे, उनको पूरा urban sanitation livelihood में लेके आ गए, उनको एक पूरा एक affirmative action जो कहते हैं ना वो शुरुआत कर दिया, and all because we created a platform like this and 20 transgenders came and said nothing for us without us. करना है तो हमारे साथ करो, हमारी आवाज को इसमें जोड़ो। That is possible with transgenders and trans women. It's not quite possible with drag pickers, not quite possible with sex workers. अलग-अलग diversity है। Sanitary worker आप कभी देखेंगे भी नहीं। You will only associate him with somebody who's working on the street cleaning. There are millions of other sanitary workers that you never come in contact with. So ये वाला diversity is what we have to manage. It's not व्यापक as an issue. It is just plain diverse. The human fabric is so complex, and that is what has been. That is what you should try and see in the field also. But that is that diversity. What does this diversity mean? And I'll stop. The last point I'm making, ये diversity का मतलब क्या है? Wash तो एक ही चीज है, कहीं टैप कराना है, कहीं solid waste management करना है, liquid waste management करना है, और this is all very infrastructure. So what does diversity mean? तीन चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे ये 2 दिन हम पूरा मतलब इस पूरा मुद्दे को समझने के लिए to restart a network which is people centric, and in this case diverse community centric, not just people, not just one plural, singular, इतना मतलब diversity है। तो 2-3 चीज हमको ध्यान में रखना है। एक तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था, the transgender is an inspiring example, क्योंकि वो डरते नहीं अपने आइडेंटिटी से, अपना लड़ाई से, अपना संघर्ष से। It's all open. I am a transgender. I am a hijab. You want it or not, I don't care. You take it or leave it. उनका ना वो बल है, ना voice, and it is a community. बहुत आसान नहीं है उनके साथ काम करना। So they don't want to be mainstream. What the hell is your mainstream? मेरे को क्या लेना है आपके mainstream से? मेरा margin में आओ, मेरा reality में आओ। वो खींचते हैं अपने reality। आशीषा, we have an office meeting. हम पहले 2 पॉइंट से आगे ही नहीं जा सकते, क्योंकि आशीषा का इतना मतलब struggle है with the first 2 points. Forget about the 20 other points that are coming. So for them, agency is their identity. Agency is not an agent of tap and toilet. So that's the learning we got from them, and very deep learning. आज भी आप मिलोगे उनसे, उनका बहुत ही they're very very conscious about their rights. That is one thing. So what is voice? What is agency? Now
we have to be also very conscious कि हमने voice दे दिया, उनको agency भी दे दिया, पर उनको मतलब एक system में नहीं, एक व्यवस्था में नहीं बैठेंगे, तो वो पूरा मतलब पीढ़ी वो voice और संघर्ष करते रहो, उनका life में improve होगा, and in the urban context वो 2 साल के बाद वो टाटा बाय बाय बोल देंगे, क्यों why would they waste their time? उनके लिए time बहुत कीमती है, you know. So that entire building के कैसे system के साथ integrate करना है और system fortunately for us everywhere we must give benefit of doubt to the system today. आपके बात में मान रही हूँ जी हजूर करते रहो respected appeal requested ये सब बोलते रहो पर अभी system में एक मतलब it's a do or die situation. आप टॉयलेट नहीं दोगे, आप धोने के लिए पानी नहीं दोगे, if your cities don't get organized, it doesn't get leveled, public health is a big emergency now. ये मतलब this is only the beginning, COVID is only the beginning, तो बहुत ही उनका इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पैसे नहीं आएगा, उनकी बहुत सारी चिंता है, गरीब से उनकी ज्यादा चिंता है, तो the system is today open, you know, not for us but for the community. If we create stalwarts in the community and आप जाओगे हर एक level on election level चाहिए, national election, state election और पहले बोलेंगे पानी लो, पानी पिलाओ, चलो, नहीं करना है तुम्हारा, और अगले बार आने के पहले पकड़ लेते हैं, आज भी कोई एमएलए को मतलब पंजाब गॉट you know corruption, the minister got sacked, and वहाँ का community बोला था कि पहले वाला एमएलए भी got sacked, और अभी तक हमारे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, हम पूरा उम्मीद रख के इनको लेके आए, अभी इनको भी निकाल दिया. They come with a program and agenda now. People are not just you know some please anymore. और TV और social media ने बहुत you know there's been a revolution as far as people are concerned. So the system is open. अगर हमको ना system के साथ चलना है, then we have to strategize. Community में भी एक क्षमता होना चाहिए system के साथ काम करने के लिए, और community में भी एक parallel system बनाने का क्षमता होना चाहिए, क्योंकि wash is like a housekeeping. आप 2 मिनट उस पर काम नहीं करेगा तो लगेगा कि वहां तूफान आया है, you know, वो तो घड़ी काम करना पड़ता है. It is a very laborious work. तो ये वाला दूसरा पॉइंट आप वहां देखेंगे, you will see in the field voice agency with integration into the system. But the third point is the most you know crucial. ये पूरा करने में हम क्या करते हैं, हर एक चीज पर SDG हो या CPO हो, अलग-अलग कम्युनिटी मतलब स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है, हर एक टाइम हम देखते हैं कि वो भी एक मतलब देखिए टू ऑप्ट, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाना है that doesn't get poor but is intelligent, is constructive, किसी को नुकसान नहीं करता, अपना मतलब एजेंडा आगे ले जाओ, अपने शर्तों को लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, हर एक चीज एक दिन में नहीं आना है, we can plan. That level of diversity that community must first accept. नहीं तो वो पहले वही लोग मतलब उनको रहने दो, ये तो बहुत गरीब है, इससे नहीं होगा, इसको रहने दो, हमारा अपना ग्रुप का बना लेते हैं. And the SDG particularly acts like a narrow interest group. अपना ही गुटका, you know, वो नहीं होना चाहिए, वॉश में वो नहीं चलेगा. And that is the big challenge. इसमें क्या है? It is not just physical. जैसे स्वागत ने बोला है, वहां पर कैसे पहुंचे, टैप के पास कैसे पहुंचे, कम्युनिटी टॉयलेट के पास कैसे पहुंचे, that is one problem. The other problem are the hidden barriers. इतने हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप कम्युनिटी में काम नहीं करेंगे और उनका आवाज नहीं निकालोगे. अभी हमने देखा है ये साइनेज, फिर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग 6:30 बजे काम पर चले जाते हैं, कोई सैनिटरी वर्कर 6:30 बजे नहीं आता है, तो वो इधर उधर फेंक देते हैं अपना कूड़ा. तो
And they're not accessing any service. Health नहीं access कर रहे हैं, wash नहीं access कर रहे हैं, 6:30 बजे जाते हैं, रात को 7:30 बजे आते हैं. That entire slave economy हमारे context में भी है, जो पूरा मतलब ना घर का ना समाज का उनका मतलब कोई लेना देना नहीं. तो वहां पर हम कैसे पहुंचे? So we have many barriers to overcome, and that is what you have to build that platform. हमारा काम वही है, हमारा नाम और हमारा नेटवर्क, that's all secondary. हमारा books, हमारा scholarship is all secondary. Primary ये है कि प्लेटफॉर्म बड़ा बनाओ, let the network be representative of that platform. Yeah, that is our appeal. हमको मतलब कोई ऑफिस बेरर नहीं चाहिए. आप जाकर से अपील आ रहा है उदय जी की वो मानसा में जोड़ना चाहते हैं. Everybody who joins must represent this platform. Not just represent only their work and their organization. There should be no organization. We should be agnostic. Nothing to do with CIFA, nothing to do with MARI, nothing to do with the organization. It should just be this community platform. और उनका आवाज मतलब उठाना चाहिए. I'll now call upon. Restarting meeting. Yeah. Yeah. No. अभी हम डॉक्टर श्रुति हिमानी से हम सुनेंगे एक कम्युनिटी कॉन्सेप्ट प्रोसेसेस ऑफ स्कोप के बारे में. अखिला मैम ने जो बोला था उसका कंटिन्यूएशन में डॉक्टर हिमानी बात करेगी. श्रुति हमसे लगभग 4-5 महीने से एसोसिएट है. डॉक्टर श्रुति इनका अर्बन प्लानर है और वे अपना परिचय देंगे और अपना बात रखेंगे. Is it something wrong? Hello. Yeah, Shruti, just a moment. Shruti, were you able to hear me? Yes. Shruti? Hello. Yes, you are audible. Yeah, yeah. वो थोड़ा लाइट बंद कर दो. Amen. Let's hear the recorded. Yeah. So अभी हम PPT. So जो एक प्रेजेंटेशन है हमारे पास वो श्रुति ने बना के उसको रिकॉर्ड करके हमारे लिए भेजी है. So let us first hear that. Akhila Sivdas, the journey of CIFA's work in 2 cities, Bhubaneswar and Jaipur, on safe and inclusive wash through community empowerment. Recent years have seen several wash advancements in India through introduction of national flagship programs and policy guidelines as efforts toward universal fulfillment of SDG targets. As stated here, we see a strong policy commitment through a continuum of programs such as the SBM, Amrut and others, to institutional arrangements made at state level with parastatal agencies, along with operational guidelines and support for federal governments and ULBs. Together, these provide a desirable context for implementation of safe and inclusive wash infrastructure and services. There is also a recognition for setting up mechanisms and structures on the ground
and linking it up with cross-sectoral programs such as poverty alleviation, livelihood, financial inclusion, and most critical, making it gender responsive. While considerable progress has been made, people face environmental, institutional, and social attitudinal barriers based on where they live and who they are. This interacts with characteristics related to gender, health, disability, and age, which further intensifies their marginalization and considerably increases their vulnerability. In Bhubaneswar, a city that has already faced 2 severe tropical cyclones in past 3 years, 1/3 of the slum population live in climate risk areas lacking tenure security. Nearly 37% of the households are socially vulnerable, facing long-standing neglect, alienation, and are unaware of wash rights. Over 12% households are occupationally vulnerable. To engage with opportunities and address barriers from policy articulation to guaranteeing that wash services reaches every section of the community, firstly, the voice and representation of the most vulnerable and marginalized was enabled through community management committees at the slum level. The CMCs are collective, trained, and represented by diverse groups of marginalized population. An autonomous platform was further federated at the ward level into single window forum. This was essential to ensure that the community, who are our core stakeholders, play a proactive role assuming leadership for ensuring sustainability. Secondly, for this to succeed and sustain, participatory governance was developed, starting from microplanning for inclusion of all voices to the more critical processes such as ward level monitoring and review. Lastly, to improve infrastructure through human-centric design and planning, it was essential to catalyze systemic and community-level reforms, including behavior change, to make WASH inclusion responsive and people-centric. Now, for this to happen, where community has as much responsibility in strengthening systems, we had to know who are the key actors and develop a relationship grid that brings everybody in contact with each other and builds synergy and shared perspective. We put the community, our core stakeholders, at the center to catalyze change, build their understanding on WASH system, participation, and leadership to shape effective engagement with WASH system actors. Then connected them with the proximate stakeholders, that is the right holders organizations and JESI actors, to challenge prevailing attitudes and deepen understanding of JESI focused WASH. Finally, together they advocated with all the peripheral stakeholders, the duty bearers, policy decision makers, private sector players and CSOs, to ensure shared understanding of priorities and solutions in WASH system to shape context-based interventions, build consensus on common WASH goals and set priorities, facilitate collaborative actions from planning, implementation, monitoring, as well as joint decision making for inclusive WASH service delivery, capacity, and developing tools to undertake microplanning. We then conducted household surveys to assess gaps and priorities, audit facility for safety and inclusiveness. This was then followed by submitting WASH improvement proposal to urban local body and facilitating them to check feasibility to secure approvals. Then collaboratively finalizing the proposal and planning for administrative and budgetary sanctions, jointly executing the project and monitoring the quality of supply of services and uptake by all. Finally, documenting good practices and intensifying WASH inclusion. With this approach, we have been able to bring about 2 key changes. First, strengthen decentralized governance through community representation in ward committees, participatory planning, and convergent action of all WASH actors. Second, reinforced accountability and responsiveness of system through ward-level community monitoring and review. The enabling factors that allowed the above key changes to take place have been:
flagship programs, policy mandates, and guidelines translated into actionable processes, thus enabling us to strengthen incremental change at the community and household level. Wash for all being voiced as a non-negotiable demand at every level, enabling us to deepen wash prioritization, not just as obligation, but also as right. Strong community preparedness and capacity to engage with the wash system, and solutions advancing inclusion and, more importantly, curbing potential harm. Now we share a few photo voices of change agents highlighting how transgender persons were placed at the center of WASH Inclusive program to bring about transformative change, from social entitlements to advocating for inclusive WASH to securing livelihood. For example, transgender groups contracted for collecting vehicle parking fees. This photo voice shows the CMC and Single Window Forum members using their new capacity, knowledge, confidence, and relationships to engage with government officials to create change. The changes that we discussed took place in 4 ways. First, organizational platform development, that is establishment of slum level CMC and administrative ward level SWF, represented by marginalized groups to drive and influence change. Second, capacity building, that is hands-on approach to learning and training on communication, management, and regulation of WASH services. Third, building enabling environment with support of RHOs and JESI actors. Fourth, policy and program advocacy through collaborative actions from micro-planning, execution, monitoring, including citizens' feedback through IVRS, a mobile-based technology, and jointly managed SANI wall or dashboard capturing status of WASH services. Our field experiences further highlight 3 key lessons. Having community at core and well integrated into the WASH system for recognition of voice and agency of most marginalized. Community leadership for effective engagement with system actors and contribution to safe, inclusive services. And community operating structures for equitable and sustainable WASH gains through collaborative actions. Our key recommendations would be to recognize that voice and agency is representative of gender and all intersectionalities and integral to the process of WASH inclusion from start to finish. Develop strong autonomous community operating structures that get recognized or mandated without getting co-opted. Identify ways to institutionalize leadership capacity development such that it continues beyond a CSO intervention. Thank you. Sir, I request Sitaram sir to share your views. Yes, please. Sir, just want to add 2 things. यहाँ पे CMC SWF दिखाया. तो CMC का मतलब है कम्युनिटी मैनेजमेंट कमिटी, सामुदायिक प्रबंधन समितियां हैं जो हमारी बस्ती की स्तर पे कम्युनिटी जो काम करते हैं. सिंगल विंडो फोरम है, एकल सदस्य फोरम है जो वार्ड लेवल में फेडरेटेड सिस्टम है, वो वार्ड लेवल में काम करते हैं. सो वो दो अंतर है जो हम शेयर करते हैं. सर वो thank you. So that was really impressive work. Am I audible? This is not, you need it? I feel my hands are tight, so I always prefer to. No. This is more my style, so I'm going to be walking around, so I don't want to be tied up there either. Anyway, so thank you very much for that presentation. It gave a good demonstration of what can be done at the grassroots level. And what I also would like to appreciate is the way it has been documented. जैसे हम बहुत काम करते हैं, पर ये नहीं लिखते कि कैसे किए हैं और क्या किए हैं. करते जाते हैं, मगर उससे जो सीखना है
उसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं रहता है. So the effort and documentation and learning is as much to be appreciated as the work itself. So well done. My attempt in the next few minutes will be to get all of you to talk a little bit about some of the terminologies that we often use, familiarize ourselves with some concepts. जैसे हम बहुत words use करते हैं, जैसे sustainability. अब किए हैं, use किए हैं sustainability. अब वर्ड को डेवलपमेंट सेक्टर में यूज करते हैं ना, करते हैं. तो इसका जो मतलब है, क्या समझते हैं सस्टेनेबिलिटी से, क्या समझते हैं डेवलपमेंट का, क्या मीनिंग होगा. तो इस तरह का जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, सिमिलरली वॉश सेक्टर में जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया. सैनिटेशन ऑफन इज इक्वेटेड टू बिल्डिंग लेट्रिन्स, लैट्रिनाइजेशन. मगर सैनिटेशन तो बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ एक टॉयलेट बनाने से सैनिटेशन तो नहीं मिल जाएगा. सो मेरा अटेम्प्ट ये रहेगा is just stimulate a little bit of thought in exploring the meaning of certain words and understanding some concepts, and I'm going to use the SDG context for it, because a lot of what was shown there is reflective of the aspirations in SDG. So do you have a changer? You will do that. Okay. Okay. So development, sustainability. How do we go from individual to community to global? You know, water and sanitation for me as an individual. मेरे लिए जो टॉयलेट बन गया या मेरे घर में जो नल लग गया, उससे समुदाय का क्या फायदा है या क्या नुकसान है, और समुदाय में एक बदलाव आ गया तो उससे ग्लोबली क्या कनेक्शन है. और रिवर्स हम देखें तो कुछ ग्लोबली पॉलिसी बन रहा है, तो वो ग्लोबल पॉलिसी नेशनल प्रोग्राम्स में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वो नेशनल प्रोग्राम मेरे गांव तक कैसे पहुंचेगा. सो दिस इंडिविजुअल टू कम्युनिटी टू ग्लोबल एंड रिवर्स फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ दैट. MDG का सुना है सर? MDG. How many of you have participated in the MDG process? I'm sure some of you stalwarts have been with the MDG process. MDG था Millennium Development Goal, और SDG क्या है? Sustainable Development Goal. तो क्या डिफरेंस है MDG SDG? क्या डिफरेंस है? नाम में फर्क है या कुछ और भी है? क्या सोचते हैं? MDG क्या था? कितने थे? 8 MDGs थे, मगर मेजर डिफरेंस ये था कि वो टॉप डाउन था. मतलब कुछ लोग जिनेवा में बैठ गए और सोचे कि ग्लोबल डेवलपमेंट इस डायरेक्शन लेना चाहिए और हर कंट्री ये अचीव करना चाहिए. सो इट वाज नॉट अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, व्हेयरएज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो उभर आया है, दैट वाज अ फार मोर पार्टिसिपेटरी प्रोसेस. सो अब हम SDG के बारे में सोचेंगे तो कुछ बेसिक चीजें हमें मालूम हो तो अच्छा होगा. तो इसलिए उसके बारे में मैं कुछ बात करने के लिए अब सोच रहा हूं. नेक्स्ट. Yeah, next, sir. Move on. Yeah. So development क्या है? Development. What is your idea? एक टेबल से एक response. What is development? What do you think is development? Oh, उसको development. कम्युनिटी में डेवलपमेंट ना. Oh, क्या है ना कम्युनिटी में? जैसे कि जनरल के लिए ट्रायल्स वगैरह. Okay. Okay. के ये आपके हिसाब से वो डेवलपमेंट है. व्हाट इज डेवलपमेंट?
सतत चलने वाले विषय, किस डायरेक्शन में चलेगा वो, क्या, व्हाट इज दैट डेवलपमेंट? चेंज ऑफ any change in condition is development. Positive change in condition. So how do we measure development? Positive ho, negative ho? What today is what difference will it have? Yeah, so these again, I am again touching because many of these concepts we will not even think about, but use those terminologies. What is GDP? Gross domestic product. What is GNH? जो बताएंगे उसको GNH is gross national happiness. Gross national happiness. तो GDP इंपॉर्टेंट है या GNH इंपॉर्टेंट है? क्या सोचते हैं आप? कितने लोग सोचते हैं कि नहीं भाई GDP ही इंपॉर्टेंट है? Can you raise your hands? Or how many of you feel no, GNH is important, happiness is important? Can you show a raise of hands? So what does GDP measure? Next. So GDP, which is the measure of all that a country produces, is more a reflection of the economic growth in a country. And you're all saying that happiness is more important than productivity. And as a person, I agree with it, right? Because development as such has multiple dimensions, and we all touch different dimensions of it. जैसे मैडम ने बताई कि जो जेंडर इक्विटी है या बेसिक नीड्स है वो डेवलपमेंट है. कुछ और लोग बताया कि प्रोग्रेस in a positive direction, being better than yesterday, is development. So we all understand development in different ways. But the basic thing is that it includes economic dimension, it includes infrastructural improvement. जैसे सड़क बन गया, नया सड़क, बढ़िया सड़क, fantastic, that's development. Social improvement, जैसे भेदभाव नहीं है, सारे इकट्ठे चल रहे हैं. Health, I'm a doctor, so I'm concerned about illness. So सारे लोग तंदुरुस्त हैं, सारे लोग प्रोडक्टिव हैं, गुड एजुकेशन, all these are dimensions of development. But कल का एक न्यूज़ आइटम, पता नहीं कितने लोग आप देखे हैं, टेक्सास में there was a very very unfortunate incident yesterday. Anybody has read newspaper? Anybody knows about it? हम सोचते हैं कि इसे हो गया और बाइडेन जी ने ये कहा कि जब मैंने शपथ लिया था तब बोला था कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, तो बहुत अनफॉर्चुनेट. तो हम सारे सोचते हैं कि भाई अमेरिका में तो they are all very rich, they are all very happy, डेवलप्ड कंट्री है ना, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है तो सही, वहाँ बहुत अच्छे रोड्स हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, बट लोग कैसे हैं वहाँ ये देखे तो कभी कभी you get into a doubt whether is it really वो किस तरीके का डेवलपमेंट है वो. So that is not really what we are talking about. We're talking about peace, we're talking about cooperation, talking about harmony, ultimately about happiness. So that is development, and all the processes that we do should lead us to that development. Next. So human development is important, social strengthening is important. So we call that human capital and social capital. Next. So there is a beautiful Subhashitam which I get inspired by. It says, Bhitebhyaha abhayam deyam vyadhitebhyastataushadam deya vidyarthine vidya deyam annam kshudature. So there are 4 important things that people should be always
sure of the annam, food for sustenance, vidya, which will give you food, aushadam, which will make you work, but most importantly, abhayam. There should be that fearlessness in the community, complete security in the community, no sense of अरे क्या क्या हो जाएगा मेरा, रात में मैं निकल सकूं या ना निकल सकूं. So इस तरह का जो मन में डर रहता है वो नहीं होना चाहिए. So that is the level of improvement, positive movement that we want next. So sustainability. So anybody, what is sustainability? Sustainability का क्या understanding है आपके मन में? Sir. कोई बात नहीं, चलो बोलो क्या 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 सोचते हैं? Sustainability, continuous process. So what has to be sustained? हम काम करते रहे, हम टॉयलेट्स बनाते रहे, नल लगाते रहे, हम नल लगाते रहना है तो जो लगाए कल वो आज टूट जाना चाहिए, वो टूट गया तो ही हम दूसरा लगा सकते हैं ना. तो क्या क्या सस्टेनेबिलिटी है? So these are all questions that one should have. Only when we have some questions we will find some answers. And how do we know if it is sustained? So I am bringing up these questions because these are well documented and represented in the SDG context. Can we go to the next one? So the SDG context looks at sustainability in 3 dimensions. Previous one. Yeah. So one is the social dimension. It has to be socially sustainable. Anything that we do is expected to be socially sustainable. It should be environmentally sustainable. जैसे उदय जी सुबह बोल रहे थे, ऐसा नहीं कि जो environment में है वो सारे चीज ह्यूमन यूज के लिए है और खींचते जाओ निकालते जाओ, जैसे ग्राउंड वाटर बिना कुछ सोचे एक्सट्रैक्ट करते जाओ, ऐसे नहीं चलेगा. उसी तरह इट शुड बी इकोनॉमिकली आल्सो सस्टेनेबल. सो सोशल, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक dimensions of sustainability will give us 3 other characteristics. Any of our intervention will be equitable, viable and bearable. So these contexts of any of our intervention have to be thought about. So हम सोचना चाहिए कि is my intervention environmentally sustainable or is it damaging the environment? Is it socially sustainable? जैसे वहां पर दिखाया गया ना, उस कम्युनिटी में ही उसको कंप्लीटली रूट कर दिए ताकि सोसाइटी, वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ही उसको आगे ले जाए. So that sort of social sustainability, and then make it locally sustainable economically also by various means, so that it doesn't need somebody else to pour in money for that activity to continue. So this sustainability is entrenched in the context of SDGs also. Next. So we'll go on next. So I'm just making it faster in interest of time. So the other very important understanding that we should get about the SDG process is that it believes and promotes this 5P idea. First is the people. The people are the ones who are at the center. The planet has to be taken into consideration because that's the environment, and people cannot live in isolation of the planet. We have to work for prosperity and peace. Prosperity and peace both should be simultaneously achievable, not one at the cost of the other. And then this can be achieved only by partnership. So people, planet, prosperity, peace and partnership. So these are core concepts in SDG which we should understand and implement in our activities also. So these are strong resonating terminologies that we come across. Next. So I was talking about the MDGs, which was a top-down approach. जैसे कुछ UN का
बड़े लोग मिलके कुछ बना दिए और ठोक दिए कि भाई तुम ऐसा करो। SDG ऐसा नहीं है। SDG is more participatory and gives far more flexibility. So it has national ownership. So हर कंट्री को एक फ्रीडम है कि SDG का जो गोल्स है वो खुद के लिए बना ले। So it gives general guidelines, but the framework can be determined by the countries themselves. And inclusion and participatory approaches are guiding principles in SDG. So हम ये सारे words को भी use करते हैं. It's not just for the sake of it, but we should remember that it is enshrined even in the SDG concept also. Then universality. We use this term LNOB very often, leave no one behind. And that comes from the SDG concept because it is one of the guiding principles of SDG and reaching the farthest first. So these are very, very important for all of us. And the rights-based approach, human rights-based approach, which we were just now talking about, is also given prominent place in the concept of developing SDG itself, and an integrated approach for sustainability, not compartmentalized. जैसे water के जो department के लोग हैं, so सिर्फ water के बारे में काम करें ना, ऐसा नहीं चलेगा. It has to be integrated. So these are very important for all of us in our activities also, and these get reflected in the global principles of development also. So we see the link between what we are doing and what is reflected in the national programs and also the global framework that is coming out. Next. So based on these principles, the global bodies have come up with 16 goals touching different dimensions of development and a specific 17th goal for developing partnerships to achieve this. So 16 different dimensions of development plus one dedicated goal for processes that build partnerships. So that is something that we should again recall, that we said development is multidimensional. There are so many components and each component is important in itself. Next. So in that we all know that SDG 6 is for water, right? We are all sure that SDG 6 is of water, and in SDG 6 there are 6 components, 6.1, 6.2 to 6.6, right? 6.1 is about drinking water, 6.2 is about sanitation, right? So just remember this picture, this slide, because in this 6.1 to 6.6 all the points are mentioned, right? So let's go to the next slide. And there is also a methodology that is mentioned, which is A and B. Next, go to the next one. Yeah. So you remember the first slide that I showed about SDG 6? Unfortunately, when we come to the implementation of SDG 6, we forget all other aspects of the statement. We only look at reading this. By 2030, achieve access to drinking water for all. SDG doesn't talk only about that. It talks much more than just this. It talks about universality. It talks about equity. It talks about safety. It talks about affordability. Unfortunately, when we are trying to implement at the grassroots, when we look at the government programs that are being implemented, all these are not considered at all. Kuch pipeline bana do, nal laga do, de diya pani. When we look at sanitation, again, it looks at achieving access to sanitation for all and end open defecation. If you do that, they believe sanitation is done. No, SDG doesn't brush away sanitation like that. It is far more comprehensive. And the rest of the things are not even considered.
And one of them is extremely important, which is about integrated water resource management, point number 6.5. So we don't even get to hear about it. That is why, as WASH functionaries at the grassroots, it would be helpful if we get this broad picture, understand the big picture, and try to incorporate some of these components into whatever we do. Next. We talked about the interlinkages. Yeah, we talked about the interlinkages of the SDGs a short while ago. Dr. Sakrin was mentioning it. In this complex line diagram that is being given, that has been represented, all of these actually represent one goal. And you see that every goal is linked to at least a dozen other goals. So इस तरह का जो interdependence है, it is inevitable. उसके बिना हो ही नहीं सकता. So that is something again that we should understand. Next. So if you talk of goal number 6, and if you remember the 17 goals that we had, we see that to achieve SDG 6, which is to ensure safe water and safe sanitation, we have to look at goal number 1. One part of it which talks about basic services. Goal number 2, which talks about usage of water for food. If you don't grow food, you can't stop hunger. And if you want to eliminate hunger, grow food. To grow food, you want water. So that sort of a linkage is inevitable. Health without water and sanitation, health cannot even be thought of. सोच भी नहीं सकते कि पानी के बिना health आ जाएगा. So education, ending violence against women, value for domestic work. हमारे जो घर में महिला लोग जो पानी के बारे में और स्वच्छता के बारे में काम करते हैं, it's not even considered as work, which is very unfortunate, right? So workplace wash facilities. We as an organization have worked extensively on creating wash facilities at workplace. That's extremely important. So you see that virtually all other SDGs are linked to SDG 6. So we want that sort of a enmeshing, that sort of a knitting together, and unless that is done, we cannot bring the concept of SDG 6 down to the grassroots. जैसे हमारे घर में पानी आना है, तो ये सारे चीजें एक से एक जो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में हम सोचना है. That is the context of localizing the SDGs. Next. Yeah, next. So similarly, you see that even for goal 3, next. So even for goal 3, we see that there are so many other SDGs which are linked. Next. One. Yeah. So to achieve this, we were talking just now about multi-stakeholder approaches, and in the documented experience that was presented, again we see this multi-stakeholder approach. This has been sanctified even in the SDG concept. So we see that all these people working together is essential. Building partnerships is essential. Recognizing each contributor is essential, and that is what SDG believes in. So we have to make sure that this is encouraged. Next, move on. Because each one brings a unique value. Move on, next. And goal number 17 actually defines a lot of role clarity for what CSOs can do to enrich the process of SDGs. Next. Go on next. Go on next. So part of the work that we are doing today, analyzing, gleaning some learnings, documenting it, and sharing is also an important step that is essential for achieving SDGs. Next, more. We'll just end this here. So there is a need. Next, we'll go to the next slide and end it there. So there is a need for this SDG orientation. We all have to learn about SDGs. I strongly believe it,
Because 5 years ago, FANSA had undertaken a accountability study on SDGs. We wanted to know how many people knew about SDGs. What was the monitoring process about SDGs? And we realized that in the entire country, Government of India officials से लेकर के पंचायत राज के जो officials हैं, सारे जो hierarchy है, उनमें से less than 10 to 20% had heard of SDGs. Even in the government sector. In the non-government sector also, there was a similar lack of information about SDGs. So we believe, at least personally, I have extensively worked with various tiers and various segments. I believe that understanding about these concepts is very important. SDG gives us a good framework because the concept is very solid. It's very comprehensive. So there is a need for multi-stakeholder approach. There's a need for multidisciplinary approach. Health department has to talk to water department should talk to education should talk to women empowerment. Unless that happens, development cannot happen. And multi-SDG, you cannot say that only SDG 6, only SDG 3, unless we have that complementarity, it will be very difficult. So the whole process of localization of SDG means that all these different components are brought down to the grassroots and they are looked at as one whole and not in vertical compartments. Next. So WASH, as I see it, is not an end by itself. It is a means to achieve something bigger. So you bring water all the way from a reservoir to a community and work doesn't end there. It is a means for development. You improve sanitation, it doesn't end there. It is a process, like Sanjeev was saying, it's a process for continuous improvement. So WASH is a means and not merely a end. Next. I think this probably will be the next. So water can be an excellent entry point for this sort of sustainable change. Move on. Next, more. Yeah. So what we want to do is to look at water more holistically. It's not just about this bottled water, but the integrated concept of big water, and WASH as an entry point into community for comprehensive community development processes. Next. And that can be done by replicating what we are doing now, by learning from our experiences, by understanding what we are doing, leading on to some sort of discussion, deliberation like this, where we learn from each other. आपके जो experiences है, वो मेरे काम आएंगे, मेरे यहाँ. So उस तरह का deliberation, plan and strategize, and then deliver it in a different way, which is more effective. I think that is what we should be looking at. So that was the context that I wanted to set, so that we understand that even the small little thing that we are doing, let us not be in any way feeling that ये तो छोटा काम है, ये तो इतना ही है. नहीं, जो हम कर रहे हैं वो it's a part of a very big process, and if we can change one village, that will contribute to a global development. So let us be proud of what we are doing. And now I'll end and hand it over to Dr. Sakmin to share the process how at the grassroots. Means and end, it's a bit problematic. क्योंकि जब हम means कहते हैं ना, अक्सर वो कहते हैं कि ये माध्यम है, तो ये उसी स्तर पर रखते हैं. The word we should actually use, Dr. Sitaram, is pivotal. उसके बिना कुछ नहीं होगा. That's not means and end. ये वाला लड़ाई शुरू हो जाता है. End क्या है, means क्या है? You should just use the word pivotal. Yeah. It is good. Good afternoon, everyone. I am Dr. Sakti.
Right now, I am presenting localization and indexing SDG 6, access to clean water and sanitation in slums. That means जो SDG 6 है, इसका एक हमने इंडेक्स फॉर्म करने की कोशिश की ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग. जो नीति आयोग ने ऑलरेडी इंडेक्सेस कुछ बनाए हैं SDG के, तो उसको लेकर के SDG 6 पे कैसे अप्लाई होता है एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, कैसे बाकी सारे SDGs कैसे से कनेक्टेड है, वो हमने अपने प्रोजेक्ट के जो डेटा अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको देखने की कोशिश की. So I'll start with the introduction. Next slide. जैसे कि सर ने अभी पूरा इंट्रोडक्शन पूरा एक ओवरव्यू दिया SDGs के बारे में कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या है कि उसमें 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड 17 जो है वो कैसे पूरा प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है. तो सारे डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा, उसके बारे में देखा कि कैसे जो है बाकी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से. तो यहाँ पे हम लोग 17 जो SDG के हैं, जो SDGs हैं, वो उसमें से हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो SDG 6 पे रहेगा. जैसे कि सर ने भी पहले बोला कि SDGs जो है वो these are the development must be balanced, social, economic and environmental. That means कि तीनों ही एस्पेक्ट्स उसमें आने चाहिए, सारे ही एस्पेक्ट्स एक्चुअली आने चाहिए. तो वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज नॉट ओनली अबाउट द गोल सेटिंग एंड टारगेट सेटिंग, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ whole thing as a whole, means everything should be developed. That is why it is sustainable. जो सस्टेन करेगा, जो इवॉल्व हो, जो है ऑलरेडी वो सस्टेन करे और साथ ही साथ में बाकी चीजें इवॉल्व हो. तो SDGs नेक्स्ट जो नीति आयोग ने जो फॉर्मुलेट किया SDG इंडेक्स, उसको लेकर के हम लोगों ने ये काम किया है कि इसमें हमने पहले तो ताकि हम आइडेंटिफाई करें प्रायोरिटीज को, जो एक्शनेबल प्रोसेस हो. अगर हमको ये टारगेट्स पता होंगे तभी हम उसको एक्शनेबल पॉइंट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट मींस अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. तो वैसे ही टारगेट्स अगर हमें पता है तभी हम उसको प्रोसेस में ला सकते हैं. तो उसको प्रोसेस में कैसे लाना है, फिर प्रोसेस से उसको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है, और साथ ही साथ जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं उसको इंश्योर करना है और उसको डिलीवर करना है टू एवरीवन. नेक्स्ट हमारा फोकस SDG 6 पे ही रहेगा, जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल. But this is not a inclusive SDG or independent. This is interconnected to other SDGs also. And localizing, when we're talking about localizing of SDGs, then how this will ensure? Means कि अगर हम localizing कर रहे हैं या फिर जैसे कि हमें पता है कि SDGs are on the global platform it is given. It is a thought process of UN जनरल असेंबली में इसके बारे में बात की गई, वहां पे SDGs गोल्स कुछ सेट किए गए, कुछ टारगेट सेट किए गए. बट अगर हम उसको नेशनल और सब नेशनल लेवल पे देखते हैं, जैसे कि सर ने भी बताया कि नेशनल ओनरशिप दिया गया है. एवरी नेशन कैन सेट देयर गोल्स अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. जैसे कि हर नेशन की अलग प्रॉब्लम हो सकती है, हर नेशन का डेवलपमेंट लेवल अलग हो सकता है, वैसे ही हर नेशन का गोल अलग हो सकता है, हर नेशन का टारगेट अलग हो सकता है. तो जब हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो कुछ हमारे डिफरेंट गोल्स होंगे. वैसे ही अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, प्रोविंस लेवल की बात करें, लोकल लेवल की बात करें या स्लम लेवल की बात करें, तो जो हमारा सबसे छोटा यूनिट है स्लम, अगर हम उसकी भी बात करते हैं तो वो SDGs वहां पे कैसे अप्लाई होते हैं, वहां पे हम उसको देखना पड़ेगा कि कैसे वहां पे हम उसको कैसे SDGs को वहां पे अप्लाई कर सकते हैं according to our availability of data. Next हम ये देख सकते हैं कि जो लोकलाइजिंग SDGs अगर कर रहे हैं तो वो उसमें हमारा इंटेंशन क्या है, मीटिंग ऑफ टारगेट्स कैसे कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट कमिटेड है, उसको टारगेट्स को कमिटेड है और तो उसको कैसे वो फुलफिल कर रहे हैं और बीइंग लाइकली और आर फुलफिल. मींस कि कितने फुलफिल हो गया, कितना होने में प्रोसेस में है और कितना हो ही नहीं सकता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा. नेक्स्ट when we talk about wash,
SDGs और क्लाइमेट रेजिलियंस कैसे कैसे है, SDGs जो है वो वॉश में कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वहां पे कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड सो इन ऑल वी कैन से दैट it should be a bottom up approach and it is a bottom up approach. That means कि जब हम localization करते हैं या localization की बात कर रहे हैं कि छोटे लेवल पे अगर डेवलपमेंट होगा तो वो धीरे धीरे करके बाकी और सारी बॉटम अप मींस कि छोटे छोटे लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट कोई भी अगर हम मॉडलिंग करते हैं या कोई भी अगर हम इंडेक्स फॉर्म करते हैं तो बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं उसको फॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं कि हम ये टारगेट्स को या फिर ये चीजों को हम टारगेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ असम्पशन सेट करते हैं कि हमको एटलीस्ट इतनी चीजें हमारे इंडेक्स में या हमारे फॉर्मेट में या हमारे मॉडल में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला assumption था है कि localization of SDG must include the smallest unit of slums and households. Means कि हम काम जो कर रहे हैं वो smallest unit पे काम कर रहे हैं। Next targets have to be monitored, applying global JMP standard to measure access and use of basic and safe wash. जो JMP targets है या JMP के जो ladder है standard है वो है जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम दैट इज रिटन फॉर वॉश। तो उसको कैसे जो है एसडीजीज उसको कैसे हम देख सकते हैं कि एसडीजी के उससे कैसे लिंकेजेस बन रहे हैं। नेक्स्ट जो नीति आयोग है वो एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है इन एंडियरिंग ऑफ टू मॉनिटर एसडीजी। दैट मींस कि जो एसडीजीज जो गोल्स हमारे बनाए गए हैं नेशनल लेवल पे उसको नीति आयोग जो है वो उसको टारगेट भी सेट कर रहे हैं और नेक्स्ट उसके बाद उसको एक प्रोसेस की तरह उसको इवॉल्व कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। जैसे कि एसडीजी जो नीति आयोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो 2018 आई थिंक 18 में किया था सबसे पहले, फिर उसके बाद अभी दूसरा एक नया भी इंडेक्स आया है। तो 18 में जब उन्होंने किया था तब उसमें सिर्फ 13 टारगेट्स किए, फिर जब न्यू इंडेक्स आया तब उन्होंने सारे टारगेट्स को लिया है 16 टारगेट्स। 17 को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है इसलिए 17 को नहीं किया जाए 16 टारगेट्स को। तो इट इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस वी कैन से दैट जो नेशनल लेवल पे भी एक इवॉल्विंग हो रहा है तो हम लोग भी इसको अभी जैसे स्टार्ट किया है तो इसको हम लोग आगे इवॉल्व भी कर सकते हैं प्रोसेस के लिए। तो अगर हम ये देखें कि कुछ क्वेरीज हैं जिसको कि हमने आंसर करना की जरूरत है, इसीलिए इस इंडेक्स को बनाया गया है कि विच स्लम्स इन अ स्टेट ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि स्लम जो है वो एक स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है, एक मोबाइल एक कह सकते हैं कि कुछ लोग स्लम्स में आते हैं फिर कुछ लोग जाते हैं, तो एक तरीके से एक इवोल्यूशन है स्लम्स का। तो जहां पे लोगों के पास राइट्स भी नहीं होते, लैंड राइट्स भी नहीं होते, कभी टेरिटोरियल राइट्स भी नहीं होते, तो लोकलाइजेशन क्या वहां पे जरूरत है या नहीं है? कैन लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी हेल्प देम? क्या उनकी जो पुअर एंड मार्जिनल कम्युनिटीज है वहां पर जो रह रही है स्लम्स में, क्या उनको कोई हेल्प मिलेगी एसडीजीज को लोकलाइजेशन करने से या नहीं? नेक्स्ट, अगर हम अप्लाई करते हैं जीएनपीज को, दैट मींस तो हम बोथ बेसिक एंड सेफ वाटर एंड सैनिटेशन जो प्रोसेस में हम देखते हैं वो यहाँ पे कैसे इफेक्ट करता है और साथ ही साथ कौन कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स उस पर रोल प्ले करते हैं। अगर हम नीति आयोग का इंडेक्स अडैप्ट करते हैं तो उसमें जो है वो क्या हम ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ को आगे लेके चल रहे हैं, या सबको इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेरीज हैं जिनको आंसर हमें आगे प्रोसेस में मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने जेएमपी इंडिकेटर्स की बात की, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो जेएमपी के जब हमने बात करी जेएमपी लैडर्स की, तो उसमें कुछ चीजें दी फॉर सेफ वाटर, सेफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, कि कैसे जो है हम बेसिक से सेफ की तरफ जाते हैं, या फिर जब कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है वहां से हम सेफ की तरफ कैसे जाते हैं, वो कुछ पैरामीटर्स जेएमपी ने ऑलरेडी दिए हुए हैं। सेफ जैसे कि वाटर में अगर हम देखें तो सरफेस वाटर, फिर अनइम्प्रूव्ड, फिर लिमिटेड, फिर बेसिक एंड सेफ। उसमें जो है एसडीजीज कैसे
safely manage water. SDG 6.4 is very much related to water. Then SDG 6.2 is related to sanitation, and likewise GMP indicators are also given. Like open defecation को हमें पूरा end करना है, फिर उसके बाद कैसे जो है अनइम्प्रूव्ड से लिमिटेड से फिर सेफ से फिर बेसिक की तरफ जाना है. तो जो 6.2 है that is open defecation, तो वो यहाँ पे भी interrelated है. 6.3, 6.A and B, these all are related with GMP indicators also. Likewise hygiene. Next slide. जो नीति आयोग ने इंडेक्स दिया है उसको हमने अडैप्ट किया अपनी मेथोडोलॉजी, मतलब उनकी मेथोडोलॉजी को हमने अपने इंडेक्स पे अप्लाई किया और कुछ चीजों को कैलकुलेट किया है. तो उसमें ये मेथोडोलॉजी जो नीति आयोग ने यूज किया था वो ये है कि सबसे पहले तो हमें रॉ डेटा देखना है, मींस कि डेटा की अवेलेबिलिटी देखनी है. अगर कोई भी इंडेक्स हमें बनाना है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि डेटा कितना अवेलेबल है, क्या अवेलेबिलिटी है डेटा की, कहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं. तो सबसे पहले रॉ डेटा, देन टारगेट सेटिंग. जैसे कि अगर हमने ये देखा कि एसडीजी 6 है, बट 6 में भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, तो हर पैरामीटर के क्या टारगेट्स होने चाहिए वो सेट किया. नेक्स्ट उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करना कि अगर जैसे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर हमने लिया कि एससी/एसटी पॉपुलेशन को लिया, तो एससी/एसटी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हमें देखना पड़ेगा कि वो नेशनल लेवल पे कितना है, स्लम्स में कितना है. तो एक तरीके से हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी स्क्यूड. फिर उसके बाद गोल का स्कोर देखा कि कैसे जो है उसको कंपोजिट स्कोर बनाया, और इस स्कोर को अचीव करने के लिए ये फार्मूलाज यूज किए हैं. नीति आयोग ने 3 फार्मूलेज को लिए हैं, यहाँ पे हमने 2 ही फार्मूले लिए हैं, बिकॉज जो एक उनका है वो कि अगर जो पीछे जाते हैं या कुछ कम करना है वो डिजीजेस में मेनली उनका वो फार्मूला अप्लाई होता है, तो वो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, तो इसलिए इसको यूज नहीं किया. फर्स्ट फार्मूला में ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम. कुछ चीजें, कुछ ऐसे टारगेट्स होते हैं जो कि हम ये नहीं कह सकते कि 100% हो गया तो वो कंप्लीट हो गया. कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमें 100% करनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि 100% होने के बाद भी उसमें और वर्क किया जा सकता है, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम करके लिया है. नेक्स्ट फार्मूला है कि जिसका टारगेट 100% है तो 100% से मिनिमम में कितना अभी डिफरेंस है. नेक्स्ट स्लाइड. This is all my work over here कि कैसे जो है पूरा एसडीजी इंडेक्स बनाया है हमने, कैसे इंटर रिलेटेड है, क्या इंडेक्स की वैल्यूज है और क्या ये कौन-कौन से इंडिकेटर्स इसमें हमने यूज किए. तो एसडीजी इंडेक्स जो बेसिकली नीति आयोग का है, उसमें क्या है, उसमें है कि 16 इंडिकेटर सारे लेकर के सबका कंपोजिट स्कोर निकाल के फिर उसका एवरेज किया गया है या फिर उसका मीन वैल्यू निकाला. तो यहाँ पर हमने पूरे 16 इंडिकेटर्स नहीं लिए हैं, बिकॉज our work is basically on wash or we can say on water and sanitation. तो सारे इंडिकेटर्स हम उस पे वर्क नहीं कर सकते थे, तो जो इंडिकेटर्स हमारे इसके लिए यूजफुल हैं वो लिए गए हैं यहाँ पे. और इसमें बेसिकली इंटरकनेक्टेडनेस ये दिखाया है कि एसडीजी 6 को एम्प्लीफाई करने के लिए कौन-कौन से और इंडिकेटर्स यूज हो सकते हैं या और कौन-कौन से एसडीजी जिसमें इंटरकनेक्टेड है. तो हम जैसे हम लोगों ने अभी बात की बॉटम अप, तो यहाँ पे भी बॉटम अप समझाएंगे कि पहले जो है एसडीजी 10, 11, 5 these all are related or these all are contributed to SDG 6. SDG 5 achieving gender equality and empower all women and girls. This is a target set by नीति आयोग. तो उसमें उन्होंने जो लिया है वो यहाँ पे टारगेट्स नहीं हो सकते हैं बट इंडिकेटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो जेंडर इंक्लूसिवनेस या जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं नीति आयोग, वहाँ पे वायलेंस की बात आती है, वहाँ पे बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी अलग चीजें हैं, वो यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर ये है कि जो इंक्लूसिव है, ये जेंडर इक्वालिटी की बात है, वो वॉश की सर्विसेज में कैसे हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं. तो यहाँ पर है फीमेल एंड मार्जिनल ग्रुप का पार्टिसिपेशन क्या है वॉश की सर्विसेज, सिर्फ अवेल करने में नहीं, अवेल करवाने में भी. नेक्स्ट, फीमेल एंड मार्जिनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन क्या है, फीमेल एंड मार्जिनल ग्रुप का लीडरशिप क्या है, बिकॉज बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ काम करते हैं और वो उसी कम्युनिटी में से होते हैं जो उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं, जो उनको अवेल कराने में हेल्प करते हैं.
Next, SDG 11, make city inclusive, safe, resilient and sustainable. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स थे नीति आयोग के भी, तो इसमें से जो हमारे यूज का था वो हमने लिया, जैसे कि परसेंटेज ऑफ वेस्ट प्रोसेस्ड, install sewage treatment capacity as a proportion of sewage generated in urban areas. फिर उसके बाद SDG 10, reduce inequality. Reduce inequality में जो नीति आयोग का इंडेक्स है उसमें उन्होंने मेनली लिया है कि मेनली वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि कितना फंड जनरेट हुआ, कितना फंड यूज हुआ, उसको वो लेते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेते हैं। या फिर वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अगर लेते हैं तो वो लेते हैं कि लोकसभा में कितना पार्टिसिपेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना पार्टिसिपेशन है, और कितना ट्राइबल सब प्लान में उन्होंने फंड रिलीज किया, कितना यूज हुआ। तो वो एक इकोनॉमिक टर्म है या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो हमने लिया है, यहाँ पे रिड्यूस इनइक्वालिटी में कि वुमेन का क्या रोल है, एल्डरली वुमेन, पीडब्ल्यूसीज, टीजीज, एडीजीज, एससी, एसटी, उन सब का कितना इंक्लूसिव वॉश उनको कितना मिल रहा है, वो कितना ज्यादा included है in these all activities, in these all services। तो इस तरीके से ये इंडेक्स निकाला गया और ये सारी चीजें फिर SDG 6 को एम्पलीफाई करती है, दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। और फिर इसके बाद ये चारों इंडेक्स लेकर के एक SDG इंडेक्स फॉर भुवनेश्वर आई हैव कैलकुलेटेड। तो जो आपके राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है वो प्रोजेक्ट स्कोरिंग है और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नीति आयोग के स्कोरिंग्स है। तो जो SDG इंडेक्स है, प्रोजेक्ट का स्कोर है 53, दैट मींस on all these four average score is 53 and नीति आयोग का 58 is for ओडिशा। उन्होंने सिटी लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का एनालिसिस अभी नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ इंडिकेटर्स दिए हैं फॉर ओडिशा, बट जो नीति आयोग का इंडेक्स निकाला है फॉर ओडिशा इट इज 58। जब हम SDG 6 देखते हैं तो जो नीति आयोग का इंडेक्स है उसमें 85 एवरेज स्कोर और जो प्रोजेक्ट का स्कोर है फॉर भुवनेश्वर इट इज 64। बिकॉज इंडिकेटर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इंडिकेटर्स डिफरेंट होने की वजह से भी ये स्कोर कुछ स्क्यूड हो सकते हैं एक जगह एक से दूसरे में। जैसे कि SDG 5 अगर हम देखते हैं तो नीति आयोग का जो है स्कोर वो 35 है और जो प्रोजेक्ट का स्कोर है वो 61 है। Then 11 में 51 as of नीति आयोग score and for Odisha score we can say it is for Odisha and 67 is a Bhubaneswar score of project and likewise SDG 10 में project का score कम आ रहा है because indicators are different। we have not taken the economic perspective, we have not taken the that economic indicators, that is why it may be likewise because of this and SDG and Niti Ayog's score for Odisha it is 69। So अगर next है 45 slums लेकर के इस एनालिसिस को किया गया कि 45 slums का इंडेक्स प्रिपेयर किया है। तो इन 45 slums में हम ये देख सकते हैं कि कुछ slums जो है वो relatively high score, they are achieving relatively high scores, some are at middle and some are at low, and when we add up middle and high we get approx median value। so जो आपके जो यहाँ पे जो relatively high या relatively low बोल रहे हैं ये SDG का जो नीति आयोग का SDG 84 वैल्यू है उससे कंपेयर किया है कि 84 से ज्यादा कितने हैं, 84 से ज्यादा अप्रॉक्स 13 स्लम्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि 29% ऑफ आवर स्टडी है। तो नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द लास्ट ग्राफ कि कितना कहां पे कितना किसका स्कोर है और कैसे क्यों है वो स्कोर, वो भी एनालिसिस है इसका कि क्यों है स्कोर। तो सबसे पहले रिलेटिवली हाई की अगर हम बात करें तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं कि अगर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि कोई स्लम जो है वो बहुत ज्यादा अचीव आगे कर रहा है, कोई स्लम ऐसा हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने के बाद भी वो उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी वहां पे रोल प्ले कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल फैक्टर्स
तो जो हाईली रिलेटिवली हाई स्लम्स है वो ज्यादातर ऑथराइज्ड हैं, टेनेबल हैं, और कुछ वहां पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं। दैट मींस कि मे बी सम गवर्नमेंट सपोर्ट इज देयर टू फैसिलिटेट दीस सर्विसेज ओवर देयर। फिर उसके बाद मीडियम में अगर हम देखें तो वहां पे अनऑथराइज्ड स्लम्स हैं बट टेनेबल आर देयर, और वही अगर हम रिलेटिवली लो में देखें तो ज्यादातर अनऑथराइज्ड है, अनटेनेबल है, और साथ ही साथ ट्रेडिशनल विलेजेस हैं जो कि अभी आगे कोप अप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट राइट नाउ दे आर लैगिंग एंड होपफुली बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे वो भी। तो नेक्स्ट हम अगर देखें कम्युनिटी एंगेजमेंट जो फैक्टर है हमारा, जो ये सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज की हम बात करते हैं, तो वो कैसे जो है कैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट से बहुत सारी सर्विसेज को उन्होंने कैसे एक्सेस किया, वाटर की पाइपलाइन का कनेक्शन करवाया, अफोर्डेबल डिस्लजिंग करवा रहे हैं, डिमांड रेज करते हैं, सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। these all work are done at the community level। तो जो डिमांड सबमिट करते हैं उसमें इंडिविजुअल एप्लीकेशन अगर हम देखें तो हाउस होल्ड लेवल पे 543 सबमिट किए गए, और अगर स्लम्स के लेवल पे देखे गए तो 13 स्लम्स के लिए 25 एप्लीकेशंस सबमिट किए गए टू रेज देयर डिमांड्स एंड दे आर फुलफिलिंग आल्सो। वैसे अगर हम लीडरशिप की बात करें तो जैसे हम बोल रहे हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात है, कम्युनिटी लेवल पे ये काम हो रहा है, तो वहां पे बहुत सारे लीडर्स रोल प्ले करते हैं एंड these leaders are from the community itself। so in 13 slums में overall 417 लीडर्स हैं, और साथ ही साथ चैंपियंस अगर हम देखें तो कुछ नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक अनीता गोयल, गुलाना भट्टा एंड मेनी मोर आर देयर। ऐसे ही अगर हम मीडियम स्लम्स में अगर हम देखें तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज में सबमिटेड स्लम्स फॉर वाटर पाइपलाइन कनेक्शंस, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे वाटर पाइपलाइन कनेक्शंस अभी नहीं है बट एप्लीकेशन सबमिट किए जा चुके हैं और वहाँ पे होपफुली बहुत जल्दी हो भी जाएंगे। फैसिलिटेटेड बेनिफिशियरीज फॉर एक्सेस टॉयलेट सब्सिडी अंडर एसडीएम, तो बहुत सारे टॉयलेट की सब्सिडीज मिलते हैं, उसको कैसे यूज करना है वो देखना है। फिर अफोर्डेबल डिस्लजिंग तो है ही। फिर उसके बाद अगर हम रिलेटिवली लो में एक चीजें देखें तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज में वाटर फ्रॉम कॉमन स्टैंड पोस्ट प्रोवाइडेड बाय वैटको, दिस इज द नेक्स्ट है वाटर पाइपलाइन कनेक्शन टू हाउस होल्ड अंडर प्रोसेस। अभी यहाँ पे वाटर पाइपलाइन कनेक्शन कुछ स्लम्स में नहीं है, वो अंडर प्रोसेस है। यूज ऑफ हाउस होल्ड यूज शेयर टॉयलेट्स ये भी कह सकते हैं, और जो अफोर्डेबल डिस्लजिंग है वो अभी जस्ट बिगन हुआ है, वो यहाँ पे भी आगे प्रोसेस में है जो चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स मिल करके एसडीजी गोल्स या एसडीजी इंडेक्स प्रिपेयर किया है। तो आई स्टॉप हियर, if any questions are there. Have a whole day session. So दोनों प्रेजेंटेशन और मतलब लेवल में करेंगे फिर के बाद तो अभी हम समझ आएगा वहाँ पर भी ऐसे मतलब हर एक कंपोनेंट में हमने क्या काम किया है, क्योंकि वाटर एंड सैनिटेशन सब मिला के अब टॉयलेट बनाओगे पानी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाना बनाने के लिए जैसे सारा पानी चाहिए, तो आप देखेंगे वहाँ पर नहीं मिलेंगे सिर्फ एक preliminary presentation। Thank you, Satvi, for this presentation. जस्ट लॉन्च से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, हम लॉन्च के बाद तो फिर जाएंगे 3 ग्रुप से डिवाइड हो जाएंगे। आप सबको जो हाइट का अपने प्रोग्राम का पार्टिसिपेंट हाइट का है उसके पीछे साइड एक ग्रुप का देंगे एबीसी, 3 ग्रुप से हम डिवाइड होंगे एंड जो स्लॉट को जाएंगे गाड़ी के अंदर जा रहे हैं उससे हम डिवाइड होकर अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो तो 240 का आप लोग सोचोगे कि ए बी सी क्यों है, हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत चीजें थी दिखाने के लिए,
तो हमने ग्रुप को ऐसे रखा है कि एक ग्रुप हमने बनाया है एक्सेस टू सेफ वाटर, तो जो पानी का काम है उस ग्रुप के साथ देंगे। हमारी टीम में से एक्सेस टू वाटर में जोगल और रखना मैडम आपके साथ होंगे। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन हम दिखाएंगे, जिसमें समीर आपके साथ होंगे, उसमें जो भी हमारा कम्युनिटीज ने काम किया है उसमें। और एक ग्रुप हमने स्पेशली बनाया क्योंकि ये फांसा नेटवर्क है और सिफारकी इस पे बहुत जोर देता है कि हमने किस तरह से जेंडर और सोशल इंक्लूजन को वॉश में करा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी और सचिन ने भी कहा कि हम जिन एसडीजीज पे काम कर रहे हैं, हम काम चाहे 6 पे कर रहे हैं लेकिन 5 के साथ जोड़ के कर रहे हैं, 11 के साथ जोड़ के कर रहे हैं। तो वो इंटीग्रेशन दिखाने के लिए हमने जो अपनी हमारी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे ट्रांसजेंडर है, हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटी है, सैनिटरी वर्कर्स है, विमेन एंड गर्ल्स है, और विमेन एंड गर्ल्स में भी ट्राइबल मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज और दूसरा दलित कम्युनिटीज, उस तरह के जो भी हमारे लोग हैं और एल्डर, तो इन सब लोगों को लेके तो हमने वो जो जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन विद इन वॉच एक ग्रुप को बनाया जो कभी सर अभी एक ग्रुप लीड करेगा, हाफ एन आवर वी विल फिनिश इट ऑफ। कोशिश करेंगे आधा घंटे एक ग्रुप जोगन और अखिला मैडम के साथ जाएंगे। बी जो है आपके कार्ड में जो एक ग्रुप प्लीज थोड़ा काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थैंक यू सर। बी ग्रुप है जो समीर और जूही जी के साथ जाएंगे। बी थोड़ा करेंगे। बी 1 2 3 4 5 6 है, 6 है सर। आप 7 सर आप बी ग्रुप में जाइए। आपको इसे नहीं आपके पीछे सर, आप समीर के साथ जा रहे हैं। और सी 1 2 3 4 5 6 7 8 थैंक यू। सी ग्रुप है जो स्वागत और मैं आपके साथ रहेंगे और हम कोऑर्डिनेट करके जाएंगे। और लास्ट में हम वहां पे आपने 1 2 3 दिया, एबीसी बोलते हैं। तो वहां पे हम वार्ड लेवल ऑफिस है, सब लोग वहां पे मीटिंग करेंगे कम्युनिटी के साथ लास्ट में। क्लियर? सब मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।